Regarding that, what will be treated as a supply of some noises? Sorry, Pranshu ji. May I request all the viewers or participants to unmute himself or herself, please. We are getting disturbance, sir. Thank you, ji. Thank you. Thank you. Please, Pranshu ji, go ahead. Yes, thank you. Now what is Schedule 2? Schedule 2 says it defines that what activities to be treated as supply of goods and what to be treated as supply of services. So supply of, because before GST was introduced, there were many taxes like service tax, excise, and VAT. So same product was treated in under VAT also and was taxable under service tax also. So there was double taxation. But after GST, this problem is solved and the schedule 2 was introduced in for those services and for those goods which were treated in, which were taxable in both the acts before GST. So this made a little bit of simplicity, but there are complications in GST till date, and there will be many litigation matters also. So Schedule 2 Para 6 says composite supply. The following composite supply shall be treated as supply of services, namely, first is works contract. Works contract is a very important definition in GST. Works contract means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation of any immovable property. See here it is written immovable property. So we can say that works contract is only for an immovable property under GST. Before GST, under service tax for movable and immovable, both they were taxable for both the services. But after introduction of GST, it is only for an immovable property, and wherein transfer of property in goods is involved in the execution of such contract. Transfer of property in goods. What does this mean? Transfer of property means we have to transfer the ownership also. Not only transferring the possession, but also transferring of ownership. Ownership transfer is must in case of works contract services. And what is a construction service? There is also confusion regarding works contract service and construction service. Construction service is not defined separately in the GST Act, but it is included in the definition of works contract. So we can say that, but explanations are given under section 17(5), clause C and D. The expression construction includes reconstruction, renovation, addition, repair to the extent of capitalization to the said immovable property. Here a word capitalization is given. If your immovable property is not capitalized, then we cannot move it, or we cannot say that it is a construction service. Capitalization of immovable property is a must to declare it as a construction service. Also, entry number 1 of notification number 11 2017 says that in case of supply of construction service involving transfer of property in land or undivided share of land, value of construction service is total amount charged minus the value of land and undivided share of land. So we can conclude that a works contract service is a wider term rather than a construction service. But in a construction service, if it is a capitalized immovable property, then it will be treated as a construction service. If it is not a capitalized service, then we will treat it as a works contract service. Before this, I want to move your I want to discuss here is sale of developed plots of land is a is sale of developed plots is a land, not a sale of land, because some ARs are there which have treated them it as a taxable property, but a land is not a taxable supply of goods or services under GST. Meaning of land, it is not defined in anywhere in the GST Act, but we have to see the other
acts also for taking it as a definition, for reading it and a definition. Land means an area of a ground, especially when used for a particular purpose such as farming or building as per Cambridge Dictionary. As per Cambridge Dictionary. Section 3A of Land Acquisition Act also defines land as it includes benefits to arise out of land and things attached to earth or permanently fastened. So benefit, any type of benefit which arise out of land will be a definition of land. It will be included in the definition of land. Then there is a section 3A of Bombay Land Revenue Code. Land includes benefit to arise out of land and things attached to earth. So all the definitions, see here, a Supreme Court decision is also there which says that land includes benefit arise out of land. So anything which arises, which any benefit which arises out of land is a that is included in the definition of land. Then what is an immovable property? Immovable property is also not defined under the GST Act, but we will then go to other acts, and in a General Clause Act, immovable property is defined shall include land, benefits to arise out of land, and things attached to earth. Immovable property as per Registration Act includes land, other benefits to arise out of land. See here, we can see that many definitions are there under different acts which includes the land, and land also includes the benefit which arise out of land. So we can say that anything which arises out of land, any benefit is included in the land. Then a Gujarat AAR. Gujarat AAR, Gujarat advance ruling was there. They said that the sale of plots, developed plots, is not a sale of land, and the GST will be liable on the sale of plots on the developed plots. But there was no discussion. From my view, it will not be a, it will be squashed in the High Court or Supreme Court, because advance ruling is not applicable on all the sessions. It is only applicable who applies for the advance ruling authority. So from my view, there was no discussion on composite supply. Composite supply, in a composite supply, we read that which is a naturally bundled. If we want to sell a plot of land, then we only developed it so that we can get a good amount of compensation or consideration regarding that land. So it will be treated as a composite supply. Only the development is only a part of that, and it is a naturally bundled with the land. So they did not discuss anything on the composite supply. Sale of land is a principal supply, and services provided are done to make the land only saleable. Where basic amenities provided do not change the nature of land. Service portion on development can be asked to be taxed instead of the full sale consideration. Then I want to move towards section 17.5D. 17.5 we know that it is a blocked credits. 17.5D says that goods or services or both. Goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property on his own account, including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business. So this is a definition, this is a restricted ITC given under section 17.5D regarding construction. But I think that it is a vague definition and vague introduction. It is not fully clear, because in this we can argue that on his own account to be read with construction or receipt of goods or services. From here it is written on his own account. Whether it is for a construction service or for a receipt of goods or services, then who should carry out the construction service? Goods or services are both received by a taxable person for construction of an immovable property. Whether the person who applies for a construction, who is doing a construction service, or any other third party who is taking the construction service from a third party. Then the phrase, when such goods or services used in the course or furtherance of business, does it attach the construction service or supply of any goods or services to a taxable person? So
This provision is a sometime I come to a conclusion that it is some vague provision, but in common parlance, we take it as such that the construction service for a human property, any goods or services received. जी बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है पीछे से सर प्लीज अनिल जी प्लीज Please unmute yourself, sir. Again, I request all the participants. We are getting disturbance. Please check your unmute yourself, please. May I request all? Thank you. Please go ahead, Pranshul. Sorry for disturbance, sir. No. Go ahead. So we from this provision it is and some vague provision is given. So I think that it will go into a litigation matter, and we will see in future that what is taken the decision by the Supreme Court or High Court. Then there was a case regarding Safari Retreats Private Limited versus Chief Commissioner in Orissa High Court. 17.5D was challenged on the count of being violative of Article 14 and Article 19. These articles are given in the Constitution of India regarding that a person cannot be denied any credit or anything if he is providing any service. The court read down the provision holding narrow interpretation by the department cannot be accepted as it frustrates the objects of the act. In this case, it was there that a person was constructing a mall and it was to be given on rent, but the chief commissioner of CGST Act, he denied the input tax credit, being taking the provision 17.5D as a provision for input tax restriction. But the Orissa High Court said that narrow interpretation by the department cannot be accepted. The Orissa High Court also taken the decision of Supreme Court. The very purpose of the credit is to be given is to give the benefit out to the assessee. The benefit must not be restricted, and it must not be retained by the department. The assessee is required to pay GST on the rental income arising out of investment, should be entitled to utilize the credit on input under sections, because he has to give GST on the rental income. Then why he is being denied with the input tax credit? Assessee not retaining the property for his own purpose but letting the property out. The department has filed an appeal, filed an SLP before the Supreme Court. It is still pending. So we will see in future that what is the decision taken by Supreme Court. Tamil Nadu Advanced Ruling Authority refuses to follow the Orissa High Court. This authority has not taken the view of the Orissa High Court, and he has given the against decision of the assessee. These are the other decisions pending with the High Court. You can note them for your reference. If Pranshuji, I think there is connectivity problem, I think. anybody? Hello, Anji Pranshuji? Hanji. Ji. Hanji. There was some net issue, ji. Okay. No. Go ahead. There is a time limit for availing credit. So section 16.4 provides that no credit can be beyond the date of furnishing of the return of September following the end of the financial year, or till the rate of annual return, whichever is earlier. So what will be the position? What will be the position if the court decided in favor after 16.4 time frame is elapsed? Therefore, in DLF Cyber City versus Union of India, petition challenge section 16.4 and Punjab and Haryana High Court, our jurisdictional High Court issued interim direction wide order dated itna. If the petition is allowed, the assessee would be entitled to claim credit even if the time has elapsed. So we can take the decision reference of this Punjab and Haryana High Court to take us in our favor.
Now moving again with other definitions which were introduced after 1st of April 2019. These definitions are important. Definitions are important because these were introduced after amendments in 1st April 2019. There were huge amendments in after 1st April 2019 for the benefit of the people of the first definition was apartment. Apartment means shall have the same meaning as assigned to it in clause E 2E of real estate RERA definition. The same definition from RERA Act has been taken in this GST Act also. In this, the residential apartments shall mean an apartment intended for residential use as declared to RERA or any competent authority. Then a commercial apartment shall mean an apartment other than a residential apartment. Affordable residential apartment. These definitions are important so that we can decide that what rate will be taken on the construction service, either 1% or 5%. Affordable residential apartment shall mean in a project which commences on or after 1st April 2019 or in ongoing projects in which old tax rates are not opted for. There was an option provided to the builders whose projects were ongoing as on 1st April 2019 so that they can move towards the new tax rates or they can prefer their old tax rates. So affordable residential apartments definition gives that in a project which commences on or after 1st April or ongoing projects in which old tax rates are not opted for and having a carpet area exceeding 60 meters in a metropolitan cities, 90 square meters in a city or town other than metropolitan, and both the definitions, both the provision conditions should be followed, and a gross amount charge is not more than 45 lakh rupees. So gross amount definition includes consideration charge for construction services, transfer of land or undivided share or any other amount charged. So both definitions, first carpet area plus gross amount charge, both the condition must fulfill. Then a definition of project. What is a project? Shall mean a real estate project or a residential real estate project. Because both the projects have different tax rates, so it is important to know their definitions. Real estate project as per section 2Z9 of the RERA Act, which means development of a building or a building consisting of apartments or an existing apartment or a part thereof into apartments, or development of land into plots. Purpose of selling includes common area development works. And residential real estate projects shall mean REP in which carpet area of commercial is not more than 15%. Out of the total 100%, not more than 15% is a commercial area, then it will be treated as a residential real estate project. Otherwise, it will be treated as a real estate project. Apartment booked on or before 31st March. This definition is important for calculating for ITC reversal. It shall mean an apartment which means all the following three conditions. Because apartment booked on or before 31st March, whether their tax has to be paid on new rates or old rates, time of supply on or before 31st March, and at least one installment has been credited on or before 31st March, and an allotment letter or sale agreement or any other similar document has been issued on or before 31st March. All the three conditions will be fulfilled, then it will be treated as apartment booked on or before 31st of March. Then what is a carpet area? Because builders sell their flats or any property or a project defining the carpet area or built up area, but in GST they are only taking a carpet area definition. It means net usable floor area of an apartment, excluding the areas. We have to exclude the areas covered by external walls, areas under service shafts, exclusive balcony or veranda, and exclusive open terrace area, but includes the area covered by internal partition walls of the apartment. We have to take only the internal area of a flat or a project or an apartment. We have to exclude all the external areas, including the veranda and the external walls, to calculate the carpet area. Exclusive balcony means the area of balcony
which is pertinent to the net usable floor area of an apartment meant for exclusive use of an allottee. For a particular allottee, a balcony area is provided, it will be excluded. Now, ongoing projects. What are ongoing projects? Shall mean a project which fulfill all the following conditions. Commencement certificate has been issued on or before 31st of March. Where commencement certificate is not required to be issued, it is certified by any of the authorities specified. Completion certificate has not been issued. Apartment being constructed under the project have been partly or wholly booked on or before 31st of March. So all the following conditions to be fulfilled to define to being under the definition of ongoing project. Commencement certificate has been issued. Commencement certificate is not required. So there are some areas where commencement certificate is not required. So it will be then a certified. It is certified by any authority specified. There must be any authority which is specified to be providing a certificate. Completion certificate has not been issued. If a completion certificate is not been issued, then we can say that it is an ongoing project. Otherwise, it will be completed before 31st of March. Apartment being constructed partly or wholly booked on or before 31st March. Then commencement certificate, you all know that to allow or permit the promoter to bring in development, competent authority project which commences on or after 1st April shall mean a project other than the ongoing project. Then there is also a definition of floor space index. What is a floor space index? It means the ratio of the building, the total floor area to the size of piece of land. See in the example I have taken a floor space index of equal to 2. Means if an area of land is 100 square meters, then we can build up to 200 square meters of total area over that land. We can build in 2 floors or we can build in 3 or 4 floors, but the total covered area must be only 200. Built up area must be 2 times the area of land. Then what is a tax liable on sale before and after completion? Before completion means sold on any amount of consideration received whatever name called before completion certificate से पहले आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने एक अमाउंट भी ले लिया, कोई भी कंसिडरेशन आपने परचेजर से आपने ले ली, it will be treated as a sale before completion. And after completion means if sold after taking a completion certificate from the department. On which transaction will be the GST levied? As per entry number 49 of the state list of the Constitution of India, power of levy tax on sale of land is building is provided to the state. Before GST, there were defined state list 1, 2, and 3, in which it was provided that on which goods and services will be taxed by the state and on which goods and services tax will be levied by the center and on which it will be levied on by both state and center. But after introduction of GST, there was an amendment in Constitution. There was introduced 246A article which provided the power to both center and state to levy tax on the goods and services on both. Earlier, there was no such power to both the state and center government. And for the sale of land and building, only the state had the power to levy a tax. But after introduction of GST, center also had a power to levy tax, but only on the property which is sold before completion. And in reference to sale of land, it is specifically mentioned in state list that tax is to be levied by the state government only. These are Schedule 3 and Schedule 2. Schedule 3 says that activities which are neither supply of goods nor supply of services. And in para 5 says sale of land and subject to clause B of paragraph 5 of Schedule 2, sale of building. Schedule 2 says activities to be treated as supply, and this says that activities which are neither supply of goods nor services. Means if an item is introduced in Schedule 3, then there will be no GST.
it will be outside the ambit of GST. But in Schedule 2, it is specifically providing that what will be treated as supply of goods or supply of services, where there was confusion before GST Act. The following shall be treated as supply of services only. First, it says that construction of a complex building part thereof, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier. So if we receive entire consideration after completion or first occupation, then it will be treated as a Schedule 3 item and it will not be levied to GST. This is a taxability of real estate transaction before 31st March. Affordable was levied at 8%, non-affordable 12%, commercial 12, works contract 18. ITC available was, yes, it was available. These all rates are after deduction 1/3 value of the land. And this option was provided for the builders to opt for the new rates till 10th of May, which was again extended to 20th of May. And if they did not opt, then it was deemed that they have opted for new tax regime. These are the new rates: 1%, 5%, the for RREP, then for REP, 1, 5, 8, and 12% for commercial in REP. And for commercial in RREP, it was 5%. It will be treated as a residential property because it was only a 15% margin was given in this RREP project. In GST Act, in a notification, you will see rates as 0.75 and 3.75 in one of the act. And if we double it, it will be 7.5. And after deduction of 1/3, it will be equal to 5%. So don't confuse it with the rates given in the notification. Then we will cover what is a time of supply. Time of supply means point in time when goods and services are considered supplied. So it is important to identify the date of payment of taxes. Time of supply for services under section 13(2) earliest of the following dates. If the invoice is issued within 31(2), and 31(2) that says that it should be issued within 30 days. If it is issued within 30 days, then date of issue of invoice or receipt of payment, whichever is earlier. If it is not issued within 30 days, provision of service or date of receipt of payment, whichever is earlier. And if A and B does not apply, date on which receipt shows the receipt in service or in his books of accounts. Under reverse charge, these all time of supply and place of supply is important to know when will the tax be levied. Shall be the earlier of the following: the date of payment as entered in the books of accounts, whichever is earlier, or immediately following 60 days from the date of issue of invoice by or any other document, whatever name called before. Then time of supply of goods, this also given in section 12(3) for construction services. Construction service is always a continuous supply of service. How can we say that? Continuous supply definition is given under section 233. It means a supply of service which is provided or agreed to be provided on a recurrent basis under a contract for a period exceeding 3 months. And normally a construction service will exceed a period of 3 months. So it will be treated as a continuous supply. And due date of, and what is the time of supply for a construction service? Due date of payment is ascertainable. If in a contract it is written that what will be the due date of payment, then the payment when becomes due, it will be a time of supply. If due date of payment is not ascertainable, then the date of receipt of payment. If payment is linked with completion of event, then the date of completion of event. Then there is a time of supply for development agreements. There is a joint development agreements which is common in real estate transactions. So in these joint development agreements, what is a time of supply? Service of transfer of development rights from landowner to developer. There are mainly two transactions which cover under a joint development agreement. One is that a landowner, he provides a service to
promoter or a developer for service of transfer of development rights, and another is a promoter who provides a service to landowner for construction of service. There are two transactions involved in a joint development agreement. So we have a time of supply for both the transactions. First is for service of transfer of development rights. Before 1st April, it was time at the time of transfer or possession of right to construct, notification number 4 2018, and for construction service it was same time of transfer of possession, notification number 4 2018. But after 1st April 2019, it is time of completion or first occupation, whichever is earlier, which is provided in notification number 4 2019. And for construction also, it will be CC or OC, completion or first occupation, whichever is earlier, notification number 6 2019. However, for 2018, the said notification was withdrawn by notification 23 2019 by providing an explanation. Nothing contained in those notifications shall apply with respect to development rights on or after 1st April 2019, and notification effective from 1st October. Then this is a litigation matter, that will it be applicable from 1st April or 1st October. I have not seen any such case right now, but in future, if we will come to know, I will discuss with us the same. Then comes place of supply. Place of supply is important to know whether we have to levy IGST or CGST or SGST. Place of supply for services where location of supplier and location of recipient is in India. Both the supplier and recipient both are in India. And directly in relation to an immovable property, it will be the location at which immovable property is located. If both supplier and recipient are in India, then if it is directly related to immovable property, then it will be the location of the immovable property. If the location of immovable property is located or intended outside India, then the location of recipient. If the location is property is located in more than one state or union territory, then the supply shall be treated as made in each of the respective states in proportion to the value of services separately collected, determined in terms of contract, in absence of such contract, on such other basis as may be prescribed. Where location of supplier or location of recipient is outside India, any one of the both are outside India, then immovable property is located or is intended to be located, that will be the place of supply. Value of supply. Want to know that what amount of GST should be charged. Valuation of supply is provided in section 15 of the CGST Act. 15.1 says that what is the transaction value, price actually paid by the supplier, condition not related party, or price is the sole consideration. So it is the 15.1 says that the transaction value shall be the value of taxable supply. Condition is that it should not be related, and the price is the sole consideration. Then here comes section 15.2, inclusion to transaction value. Transaction value, what must include in the transaction value? First, duties and taxes or other than GST that is charged, it must be included in the value of taxable supply. Interest, late fee, penalty, which is delayed for delayed consideration. If any interest or penalty is charged for payment, for delayed payment, then it must be included in a taxable supply. Incidental expenses charged by the supplier at the time of supply or before delivery, because after delivery it will be the risk and reward are transferred to the purchaser. Price linked subsidy other than government. This I have left because it is an important inclusion in the transaction value. Payment incurred by the recipient for which supplier is liable to pay. Payment has been incurred by the recipient. I am the recipient. I am taking the construction service for which supplier was liable to pay. I made an agreement with the supplier that you provide me the construction service and I will give you this much of amount. Let's say 100 crore rupees.
let's say I made a contract for 100 crore rupees. Then I thought that I want a building which is purely, which is a good building for good material is used in that building. So I provided 50 crore rupees of saria and cement and brick. But I have made a contract which included everything with the supplier. What this definition says, what this 15.2 says that if I have incurred 50 crore rupees and the supply, I have made an agreement with 100 crore rupees. मैं रिसीवर वो सप्लायर मैंने 50 करोड़ रुपीस का जो सामान है वो खुद लाके दे दिया किसी को और अपने सप्लायर को, तो ये डेफिनेशन कहती है कि 100 करोड़ रुपीस प्लस 50 करोड़ रुपीस we have to include both and the taxable supply will be of 150 crore rupees. So take care before entering into any agreement. If you want to provide any service, if you want to provide your own material or any labor or anything, then don't include it in a contract. Then it must be excluded from the contract. Make a contract of 50 crore rupees. You provide 50 crore rupees, then a taxable supply will be of 100 crore rupees. So before entering into any contract, please be careful. Then 15.3 deduction of discount. Any discount given before or at the time of supply. Any discount given after supply. Before supply deductible, after supply agreed, at before time of supply deductible, not agreed, not deductible. Then value of supply if price is not a sole consideration. These are given in the CGST rules, rule 27, where the value of supply or both cannot be determined under subsection 1. If 15.1 we cannot find the value under this 15.1, then we will move towards the CGST rules and first is rule 27 provides that price is not the sole consideration because there was a condition that it should not be a related party and the price must be the sole consideration. So if these any two conditions are not fulfilled, then we will move towards the CGST rules. Then here it is price is not a sole consideration. Then we will see that what is the open market value. If A is not available, if open market value is not available, sum total of consideration in money as is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply. If A and B both are not applicable, then value of supply are both like, kind and quality. If none of the above is satisfied, then we will move to rule 30 or 31. Then case 2 is related party transaction. Other condition which was to be fulfilled, if it is not fulfilled, then we will move towards rule 28 between distinct and related persons other than agent. Open market value, supply of like, kind and quality, value as per first open value, market value. If it is not available, supply of like, kind and quality. If both are not available, value as per rule 30 or 31. Goods intended for further supply. At the option of supplier, value may be 90% of the price charged by the recipient not being a related person. If you are selling it to a related person and the related person has to further supply those goods, then at the option of the supplier, it is an option of the supplier that he may charge 90% of the price charged by the recipient not being a related person. Where full ITC available, value of invoice to be the open market value. If through an agent, rule 29, open market value 90% or rule 30 or 31. Rule 30 says 110% of the cost of production or manufacture or cost of acquisition or cost of provision. 31 is the residual method. If none applies, then rule 31 will apply. It is determined using reasonable means consistent with the principles and general provisions. The supplier may opt for this rule, ignoring rule 30 also. These provisions and rules will be applicable for all transactions pre 31st March. Because after 31st of March, these provisions are not applicable for real estate projects having development agreements. For development agreements only. Value of supply in relation to real estate projects post 1st April 2019. Transfer of development rights, this is first leg of the
first leg of the transaction in which landowner provides the services to a promoter. Value of similar apartment charged by the promoter from independent buyers nearest to the date on which such development right is transferred to the promoter. Notification number 4 2019. It says that the value of similar apartments in a project, let's say there are 100 flats, the value of one flat will be the value of similar apartment charged by the promoter. Promoter means the builder from the independent buyer. Independent buyer nearest to the date on which such development right is transferred. I transferred the rights on 1st April 2019. Then on that date, the promoter, what rate the promoter is charging from an independent buyer, that will be the value of a apartment, value of transfer of development rights. Then value of construction service, total amount charged for similar apartments in the project from independent buyers other than the person transferring the development rights, means landowner, or FSI nearest to the date on which such development right or FSI is transferred to the promoter, less the value of transfer of land, if any, paragraph 2 above. It is also the same. Then value of unbooked residential or commercial apartments on the date of CC. Value of similar apartment charged by the promoter nearest to the date of issuance of completion certificate, as the case may be. These all are definitions given in 4 2019. Unbooked residential apartments on the date of CC. We calculate these values because on this value we will charge transfer of GST on the transfer of TDRs. What we say, transfer of development rights, and it is under reverse charge and will be paid by the promoter. Then comes the reverse charge liability. Notification number 7 2019 section 94, which was earlier introduced in the GST Act, and everything was liable under 94, which we were taking services or we were receiving services or goods from any unregistered person. However, after notification, after 1st of October, after October 17, it was withdrawn from the GST Act, and again it was introduced from 1st April, and only specified services and goods were introduced in this, and which includes these services. Supply of such goods and services or both other than TDR and upfront premium, which constitute the shortfall of 80%. There is a condition which I will discuss in the following slides, that we have to take 80% of inputs and input services from a registered person while building or constructing a project. If this 80% condition is not fulfilled, then the balance amount of tax will be paid by the promoter under reverse charge. Cement, if a cement is not purchased from a registered person, then we have to pay GST under reverse charge, and also capital goods falling under chapter in the first schedule of custom tariff. Then notification number 8 2019, supply of any goods other than capital goods and cement by any registered person to a promoter for construction of project, 9% means 18%. This notification overrides any specific chapter or heading which is covered. If this if a rate is provided for these goods or services in any other notification or any other act or any other heading, this notification will override that notification. Then notification number 3 2019, supply of input services other than TDR FSI upfront to the extent of 80%. This also notification overrides every heading. Notification number 5 2019, services supplied by any person by way of transfer of TDR, promoter has to pay. This is the first leg of a transaction in which landowner provides services to promoter, and there are unbooked flats on the date of completion. Long-term lease of land, promoter. Landowner is exempted for services by way of transfer of development rights or FSI after 1st April for construction of residential apartments. Earlier, landowner was also liable to pay, but after 1st April 2019, only the promoter is liable to pay on the transfer of development rights.
Quantum of RCM, what we say that GST payable on TDR, carpet area of residential apartments unbooked on the date of issuance of completion certificate, divided by total carpet area of the project. This is the quantum of RCM paid by the promoter, subject to maximum of value of unsold 5% or 1%, whichever is lower. GST payable on TDR, value of supply, we have already done before. 80% is the tax rate. Time of supply will be date of CC or OC. Other one more point. What are the conditions with new tax rates? Condition is payment of GST in cash. GST liability has to be discharged by debiting the cash ledger only. No ITC on goods and services will be available. Reversal of ITC is to be done. Regard annexure 1 and 2, it is a whole lengthy process which will take a time of half an hour. So we will discuss later on. At least 80% of inputs and input services other than capital goods, these are excluded from this, but we have to take other than those every input goods and input services purchased from a registered person. On shortfall of purchase from 80%, tax shall be paid by the builder at 18% on RCM basis. However, tax on cement has to be paid at the rate of 28% only. For the purpose of calculation of 80% threshold limit for payment of tax under reverse charge, this circular was given by the department saying that value of exempted goods services shall be included in the value of purchase from unregistered person. Exempted goods and exempted services includes interest from unsecured loans also, which are exempted from GST. But a circular says that all means it says that you have to take all the debit items of profit and loss account which are purchased from an unregistered person. This is also a litigation matter, and we will see that what the court decide in this later on. So till now it is a litigative matter. Now a concept of joint venture is left. Joint venture, what is a joint venture? It is a business arrangement in which two or more parties agree to pool their resources for the purpose of accomplishing a specific task. Means two or more parties come together, take their resources and complete a task. This agreement is different from a development agreement because they don't share their areas. Joint venture is commonly known as revenue sharing agreements. Further, the sale of flats before completion will be liable for GST and sale after completion. There are major elements in a joint venture agreement which we have to take care before entering into an agreement. Purpose of joint venture must be there. Contribution from both parties must be there. Sharing of profit and loss must be decided and must be done. And management, how efficiently it is being managed, how to handle day-to-day operation. They have to take the responsibilities and manage their task. And termination. After the completion of the project, it should be terminated. And this is a case taken Fakir Chand Gulati versus Uppal Agencies Private Limited, dated 10th of July 2008. It is held by Supreme Court in a true joint venture agreement between landowner and another. The landowner is a true partner or co-adventurer in the venture. See, the word landowner is also a true partner or a co-adventure in the venture, where the landowner has a say or a control in the construction and participates in the business. So landowner is also a co-adventurer. He also participates in the construction and participates in the losses also, and has a share in the profit and loss. The landowner himself is responsible for construction as a co-adventurer. Therefore, joint venture or collaboration in the title of an agreement or even in the body of agreement will not make the transaction a joint venture if there are no provision for shared control of interest or enterprise. If these definitions are not provided, if these conditions are not provided in agreement, we cannot say that it is a joint venture agreement. These five conditions must be there to enter to declare it as a joint venture agreement. And joint venture agreement is separately taxed.
it is not similar to joint development agreement. Sale of flat before completion will be liable to GST, and joint venture agreement, joint venture will be liable to pay GST on that sale of flats. Some advanced ruling authorities I want to discuss in regard to real estate. Enforce Infrastructure India Private Limited, Karnataka advanced ruling, liable to pay GST on flats constructed and handed over. Advanced rulings are basically, I have seen that they are always against the assessee and in favor of revenue, but they are applicable only on the person who applies for the advanced ruling. It is not applicable elsewhere. Vilas Chandamal Gandhi, Maharashtra advance ruling, liable to pay GST on TDR. Informage Realty Private Limited, Haryana advance ruling, not liable to GST on sale of plot during the development of township. However, GST liable on 20% share. This is an important advance ruling which is of our jurisdiction for Haryana. It says that not liable to GST on sale of plot during the development of township. However, GST liable on 20% of the plotted area provided to the applicant. Applicant was a company or a builder who provided a works contract service on the plot. So it says that GST is liable only on the 20%, not on the whole 100%. Dwarikesh Sugar Industry Limited, Uttar Pradesh, ITC not available for construction service to the extent capitalized. So this is all for today. Thank you so much. And now, Thank you. Please. Pranshu ji. Thank you, Pranshu. Thank you. Thanks a lot, Pranshu ji. thank you. Ji. I think so. We can take the question in the end. I think so. Our second speaker is also here. So, Pranshu bhai, हम बाद में question ले लेंगे. Yes, no problem, no problem. We can take the question. If anybody has his or her question, he can directly ask to the Pranshu. His number is given on the screen. So now, thanks a lot, Pranshu ji. As you earlier said. Anil ji. Ji sir, ji sir. मैं कल what I am saying के time was short for Pranshu ji. I think yeah. More time again to Pranshu ji, so we can have detailed discussion on the topic. Yeah. मैं ना जी, मैं this topic is not too small. Yeah, मैं उसी बात पे आ रहा था. As in the beginning, Pranshu already have said that 1 hour is not enough. Earlier, I have heard Pranshu ji 4 hours on the GST जी. On the real estate, Pranshu भाई को मैंने 4 घंटे भी सुना है जी. तो टाइम बड़ा शॉर्ट है, बट फिर भी उन्होंने बड़ी कोशिश करके precisely और nicely इसको present किया है. So thank you, Pranshu भाई. Thanks a lot for. I will share my book with the branch, and you can distribute to anyone. Yeah. It is a PDF file. ठीक है जी. Thank you, Pranshu bhai. Okay. So now I request our second speaker, C. Ankit ji, whom I earlier introduced to you all that he is a young chartered accountant and company secretary. Now I request Ankit ji to take over the charge and enlighten us on the topic refund under GST. Over to Ankit ji. Thank you, sir. सबसे पहले तो thank you, Chairman sir, C. Upkar Singh ji, Vice Chairman sir, C. Anil Kakkar ji, and all the committee members for giving me the opportunity to deliberate in front of you and in front of all the worthy professionals. Thank you, sir. So without wasting much time, I'll start my today's topic. Under GST. Sir, am I audible? या अंकित थोड़ा हाँ बिल्कुल अंकित जी वो कुछ बीच में से डिस्कनेक्ट हो रहा है बट नाउ यू आर ऑडिएबल. Okay, sir. Please go ahead. Just a second, sir. Let me share the screen. Okay. Not an issue. Ji. Sir, is my screen visible? Yeah, Ankit ji. जी अंकित जी. जी सर. तो सर स्टार्ट करते हैं रिफंड्स अंडर जीएसटी.
इस टॉपिक में सर सबसे पहले तो अगर हम जाएं सेक्शन वाइज, तो सबसे पहले जो इसमें सेक्शंस कवर होंगे 54 टू 58 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। और इसमें चैप्टर 11 के अंदर ये डिफाइंड है सर सीजीएसटी एक्ट में। और इसमें रूल्स जो हैं जो रिफंड को डील करते हैं दैट इज फ्रॉम 89 टू 97। सर ये पहला ऐसा टॉपिक है कि जिसके अंदर रिफंड्स के अंदर इतने ज्यादा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है जितने अंदर इसके अंदर रूल्स इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक सेक्शन 54 है, जो कि मैं कहूंगा कि एक मास्टर सेक्शन है रिफंड्स के ऊपर। तो उसी में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 54 से ही। सर ये कुछ एक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जब भी हम रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं जो कि हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो रिफंड एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड क्रोनोलॉजिकली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज अगर मैं अप्रैल सपोज मेरा पीरियड है रिफंड फाइलिंग का, दैट इज फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 18। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिफंड फाइल कर दूं, उसके बाद में फिर बैकडेटेड जाके या पीछे जाके 17-18 का रिफंड फाइल करूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको लाइन वाइज ही जाना पड़ेगा, मंथ वाइज ही जाना पड़ेगा। नंबर 2, रिफंड एप्लीकेशन फॉर ऑल द टैक्स पीरियड्स हैज टू बी फाइल मैंडेटरी, जैसे कि मैंने अभी कहा। एंड अगर कोई आपका सपोज रिफंड है जो कि निल है, सपोज मैं लेके चलता हूँ एक एग्जांपल, जुलाई 17 से लेके मार्च 18 तक का आपका कोई रिफंड नहीं था, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप और आपका 18-19 में रिफंड है, अगर आपको 18-19 का रिफंड अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको मार्च फाइनेंशियल ईयर 17-18 की भी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन आपको निल की फाइल करनी पड़ेगी। अदरवाइज पोर्टल विल नॉट अलाउ टू प्रोसीड टू फाइल द रिफंड एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। और इसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी, दैट रिटर्न्स शुड हैव बीन फाइल्ड and tax interest or any penalty must have been deposited for the tax period for which the refund have been claimed। ये सर डिफाइंड है सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 54। इस पे सर मैं बाद में भी एक बार डिस्कशन पे आऊंगा, बट अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि जब भी हमें रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है, मेरी उस पीरियड की रिटर्न्स ड्यूली फाइल्ड होनी चाहिए, बोथ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी। अगर मेरी रिटर्न्स फाइल नहीं है तो मैं रिफंड भी सेक्शन 50 की एक ओपनिंग सेक्शन है रिफंड्स का जीएसटी के अंदर। जैसे कि सर ओपनिंग लाइन में लिखा है, एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स or any other amount paid by him may make an application before the expiry of 2 years from the relevant date in such manner and form as may be prescribed। तो सर सबसे पहले तो एनी पर्सन पे अगर मैं डिस्कशन करूं, यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ड जो यूज करा है वो एनी पर्सन वर्ड यूज करा है। अब एनी पर्सन में कौन आ जाते हैं? एनी पर्सन में मेरा रजिस्टर्ड पर्सन भी आ गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आ गया। ठीक है, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसका टाइम पीरियड क्या है सर? एप्लीकेशन जो फाइल होनी चाहिए रिफंड के लिए, दैट हैज टू बी फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट डेट। सर रेलेवेंट डेट क्या होती है? रेलेवेंट डेट हर केसेस में मेरी अलग अलग है। अब सपोज मेरे पास 8-9 केसेस हैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं देखूं कि हर केस में मेरी रिफंड एप्लीकेशन की जो ड्यू डेट रहेगी वो अलग रहेगी, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एनी पर्सन की अगर मैं बात करूं, मेरे से एक बार किसी ने क्वेरी पूछी कि सर जैसे मेरी एक प्रैक्टिकल केस है जिसे किसी की गाड़ी रोक ली थी बैरियर पे। ठीक है, उसको अब क्या होता है कि वैसे तो ट्रांसपोर्टर्स को है कि अपना रजिस्ट्रेशन लेके चलेंगे, बट उस टाइम ट्रांसपोर्टर ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ था। अब ट्रांसपोर्टर को पेनल्टी लगा दी गवर्नमेंट ने और रेवेन्यू ने। उसके बाद क्या हुआ, सपोज उसको 50,000 रुपीज की पेनल्टी लगी, बट ट्रांसपोर्टर को एक यूनिक आईडी जनरेट करनी होती है जो डिपार्टमेंट जनरेट करके देता है इफ ही इज नॉट रजिस्टर्ड। तो ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, जल्दी जल्दी में 50,000 की जगह 5 लाख रुपए पे कर दिए। अब वो रजिस्टर्ड तो है नहीं है, तो वो कैसे रिफंड दे लेगा जो ये उसने एक्सेस पेमेंट दे दी है, एक्सेस रिफंड जो फाइल एक्सेस पेमेंट जो गवर्नमेंट को जमा करा दी, उसको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए यहाँ पे जो तभी सेक्शन में लिखा गया दैट इज एनी पर्सन, कि अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है चाहे वो नहीं है, दैट वो अपना रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और वो फाइल करनी चाहिए विद इन 2 years। अब सपोज फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो रिफंड है उसकी जो एक्सपायरी डेट या उसकी जो ड्यू डेट बनेगी, दैट हैज टू बी फ्रॉम 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
अब सपोज मार्च 19 का जो रिफंड है उसकी जो एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं वो मार्च 21 से पहले पहले फाइल हो सकती है। अब सर जो रेलिवेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया रेलिवेंट डेट हर केस में अलग अलग है। अब सपोज मैंने गलती से पेमेंट कर दी, उस केस में मेरी रेलिवेंट डेट क्या बनेगी वो डिफरेंट है। अगर मैंने क्रेडिट लेजर का रिफंड लेना है उस केस में मेरी रेलिवेंट डेट क्या बनेगी वो डिफरेंट है। अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स विदाउट पेमेंट ऑफ, जैसे हमें पता है दो ऑप्शंस रहते हैं, उस केस में रेलिवेंट डेट क्या बनेगी वो डिफरेंट है। वो एक हम आगे डिस्कशन करेंगे सर। Provided that a registered person claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of subsection 6 of section 49, ये सर एक पेमेंट का सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जिसमें हमारी पेमेंट्स जाती है, may claim such refund in the return furnished under section 39 in such manner as may be prescribed। सर इन सच मैनर का क्या मतलब होगा, इसके में इन सच मैनर का होगा कि उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन का फॉर्म है RFD 01। RFD 01 में एप्लीकेशन जाएगी, उसके बाद ही वो रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अब सर एक बार वो डिस्कशन कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसपे हमें रिफंड मिल जाएगा। सबसे पहली सिचुएशन है सर एक्सेस पेमेंट ड्यू टू मिस्टेक एंड इनएडवर्टेंस। दैट मीन्स कि अगर सपोज मैंने कोई पेमेंट करनी थी 1 लाख रुपए की, मैंने गलती से वो पेमेंट कर दी 10 लाख रुपए की, तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा? जी हाँ, वो रिफंड मिल जाएगा। एक्सेस पेमेंट ड्यू टू मिस्टेक एंड इनएडवर्टेंस। इसके क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, कैसे ये रिफंड मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन फाइल करनी पड़ेगी, वो हम फर्दर आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सर सेकेंडली है रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब सपोज सर इसका एग्जांपल है कि मेरे को टैक्स की पेमेंट करनी थी, मैंने टैक्स की पेमेंट ना करके गलती से वो पेमेंट कर दी इंटरेस्ट वाले कॉलम में या फीस वाले कॉलम में। अब वैसे तो क्या है कि आप उसको इंटर जहाँ पे भी आपको बैलेंस आप ट्रांसफर कर, बट पहले क्या था क्योंकि मैनुअल प्रोसेस था, उसके बाद फिर थोड़ा सेमी मैनुअल प्रोसेस हुआ रिफंड का, फिलहाल फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सेस बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसकी भी आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। थर्ड है सर रिफंड फॉर द टैक्स पेमेंट ऑन ट्रांजेक्शन्स बाय यूएन बॉडीज। ये सर ये कुछ एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है इंडिया में, और कुछ CSD कैंटीन्स होती है, पहले मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, इनको भी रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। इनमें क्या होता है कि जब कभी भी हम यूएन बॉडी से किसी यूनाइटेड नेशन बॉडी से कोई सर्विस, अगर वो सर्विस प्रोवाइड वो एग्जेम्प्ट रहती है एप्लीकेशन। बट अब इनको अपनी इनपुट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक इनपुट सर्विसेज भी चाहिए होंगी। अब वो इनपुट सर्विसेज के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनको एक आईडी जनरेट होती है, उसके बाद ये अपनी क्रेडिट लेजर में उसका इनपुट क्लेम करते रहेंगे। और इनकी जो टाइम लिमिट रहेगी सर, इनकी टाइम लिमिट भी डिफरेंट है रिफंड फाइल करने के लिए। जैसे कि जो रेलेवेंट डेट है बेसिकली वो भी एक इनकी डिफरेंट है, वो भी हम आगे फर्दर एक बार डिस्कशन करेंगे। इनको जो सर फॉर्म फाइल करना होता है रिफंड एप्लीकेशन के लिए, उनका फॉर्म है RFD 10। उनको एक कंपनी डॉक्यूमेंट साथ में देना होता है, जो भी इन्होंने इनपुट सर्विसेज क्लेम करी हैं वो साथ में जाएगा, प्लस एक इनको सर्टिफिकेट देना होता है कि हाँ दैट दिस बॉडी इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी, जो कि सेक्शन 55 के अंडर रजिस्टर्ड है। उसके बाद सर फोर्थ में आते हैं रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट इन केस ऑफ अपील और इन्वेस्टिगेशन। अब सपोज आपने कोई अपील फाइल करी है या कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस पर आपने प्री डिपॉजिट कराया है। अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे जब भी हम अपील फाइल करेंगे तो एक प्री डिपॉजिट रहता है 10% का। उसके बाद अगर हम कभी हायर अथॉरिटी पे जाएंगे तो दैट गोज अप टू 20%। तो अगर कल को आप अपील जीत जाते हैं या कुछ भी फेवर में डिसीजन आता है तो आपको उस प्री डिपॉजिट का भी रिफंड मिल जाएगा। फिफ्थ केस है सर जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। सर जीरो रेटेड सप्लाई से मेरा मतलब है एक्सपोर्ट्स का। अब अगर हम 3B में भी देखें, 3B में भी एक्सपोर्ट का एक अलग से ऑप्शन है, टेबल नंबर जो सेल का टेबल है उसमें जाएगा अलग से। जीरो रेटेड सप्लाई हमें अलग से शो करनी होती है रिटर्न्स में भी, और जब भी हमें इनका रिफंड लेना है तो रिफंड एप्लीकेशन भी हम इसकी फाइल कर सकते हैं।
लास्ट सर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इस केस में क्या है कि अब सपोज मेरा कोई आउटपुट है दैट इज 5% और मेरा कोई इनपुट है वो है सपोज 12%, 18% एंड 28%। तो क्या होगा जब भी मैं अपना आउटपुट लाइबिलिटी डिस्चार्ज करूंगा तो हमेशा मेरा टैक्स कम बनेगा एज कंपेयर टू मेरा इनपुट एक्यूमुलेट होता रहेगा। उस केस में हम बोलते हैं सर दैट इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। तो सर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में भी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी सर एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सर सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू टू मिस्टेक और inadvertent. As the heading suggests, it refers to the situation where the taxpayer has made excess payment of tax either by mistake or by inadvertence, resulting into more payment of tax than due to government. Since the tax that has been paid is in excess, which was actually not required to be paid, the same should be refunded to the taxpayer. जो सर हमारा सिंपल केस है कि सपोज अगर मेरे को 5 लाख की पेमेंट करनी थी, मैंने गलती से ज्यादा पेमेंट कर दी, तो वो मेरे को अमाउंट रिफंड मिल जाएगी सर। अब सर इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब सपोज अगर हम सपोज मैंने गलती से एक्सेस पेमेंट कर दी, अब मेरे को पेमेंट तो करनी थी सीजीएसटी और एसजीएसटी में, जो कि सपोज मेरी एक लोकल सेल थी, एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेते हैं, और अब मैंने पेमेंट गलती से कर दी आईजीएसटी में, तो क्या सर मुझे उस चीज का रिफंड मिल जाएगा? प्लीज सर चैट बॉक्स में बताएंगे। तो सर इस केस में वैसे क्या होगा कि जब भी अगर सपोज मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट करनी थी और सपोज मैंने आईजीएसटी की पेमेंट कर दी, तो सेक्शन 77 है ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 19 है ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, वो मेरे को क्या बोलता है कि आपने टैक्स गलती से जमा करा दिया और गलती से कलेक्ट कर लिया, आपको आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी डिपॉजिट कराना था बट आपने आईजीएसटी डिपॉजिट करा दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप पे कर दो टैक्स। गवर्नमेंट बोलती है सर आप पे कर दो सीजीएसटी और एसजीएसटी इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी विदाउट इंटरेस्ट। अब इसमें सर क्या होगा, रेलेवेंट डेट क्या रहेगी? अब सर इस केस में क्या होगा, रेलेवेंट डेट जैसे मैंने बताया कि हर केस में अलग अलग रेलेवेंट डेट डिफाइंड है। इस केस में सर रेलेवेंट डेट रहेगी द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। सपोज आज मैंने वो टैक्स की पेमेंट कर दी गलती से, आज से लेके 2 साल तक, आज है 19th ऑफ अप्रैल 2021, तो 18th ऑफ अप्रैल 2023 से पहले पहले मेरे को वो रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा। और सर इस केस में क्या है कि विदाउट इंटरेस्ट, ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या है कि मैंने टैक्स की पेमेंट तो कर दी है, इसमें एक झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से भी रूलिंग आई हुई है दैट नो इंटरेस्ट इफ आईजीएसटी रॉन्गली पेड एज सीजीएसटी इन केस ऑफ श्री नानक फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और वाइस वर्सा। कुछ एक सर हमारी रिट पिटीशन की फाइल हुई थी इसके रिगार्डिंग की एडजस्टमेंट अलाउ करी जाए, बट रिट पिटीशन तो खैर ये पर्टिकुलर एसएससी को ही उसका बेनिफिट मिलेगा, बट जो कुछ एक लीगल स्टैंडिंग्स है वो हमारे फेवर में भी है कि हाँ उसका रिफंड मिल जाएगा और उस पर एसएससी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब सर जो मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो था टैक्स पेमेंट्स ऑन ट्रांजैक्शंस बाय यूनाइटेड नेशन बॉडीज, कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज। फॉलोइंग प्रोसेस फॉर द रिफंड ऑफ for the grant of refund is recommended. Refund on purchases by UN bodies may be granted only one office each of both the tax administration within one state. अब जैसे मैंने बताया कि इनको एक यूएन जो बॉडीज फॉर्म होती है उनको एक अलग से यूनिक आईडी क्रिएट कर दी जाती है सर, उनकी यूनिक, और जो भी उनको परचेज करी है, जो भी उन्होंने इनपुट सर्विसेज क्लेम करी है, उनका एक अलग से उनको डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, या एक मैं कहूँगा एक फाइल तैयार करनी होगी, एंड दैट फाइल इज उनकी एक रिटर्न जाएगी सर अलग से GSTR 11 के नाम से। वो सर फाइल इनको जब भी अपनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे इन फॉर्म RFD 10, वो फाइल के साथ इनको अटैच करनी पड़ेगी और इनको एक अपनी यूनिक आईडी के साथ साथ वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके प्रॉपर ऑफिसर को देंगे और उसके बाद ही वो रिफंड उनका सैंक्शन होगा। अब सर इस केस में रेलेवेंट डेट क्या है?
रेलेवेंट डेट सर जितनी भी हैं वो कहीं पे किसी सेक्शन में डिफाइंड नहीं है, बट वो रेलेवेंट डेट जितने भी केसेस है सारी की सारी रेलेवेंट डेट एक एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड की हुई है। और वो एक्सप्लेनेशन कहाँ दी है, सेक्शन 54 में। और सेक्शन 54 सर जहाँ खत्म होगा वहां पे उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। वो डिफाइन करती है सारी की सारी रेलेवेंट डेट्स कि कहाँ कहाँ पे क्या कौन कौन सी रेलेवेंट डेट लगेगी। ये सर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सर रिफंड का जैसे मैंने बताया कि रिफंड के केस में क्या रहता है कि रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या है कि CSD और UN के केस में जो यूनाइटेड नेशंस की ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय देम इन फॉर्म GST RFD10. Form should be accompanied with a statement of inward supplies in form GSTR 11. RFD10 की सर एक इनकी एप्लीकेशन रहती है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है RFD10। जो भी इन्होंने इनवर्ट सप्लाईज ली है, वो जो इन्होंने रिटर्न फाइल की है, दैट इज GSTR 11। जब सर ये ऑनलाइन फाइल करेंगे उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी पोर्टल पे। एक्नॉलेजमेंट होगी इन फॉर्म GSTR 2। और इसकी टाइम लिमिट क्या रहेगी सर, जैसे रेलेवेंट डेट जो रहेगी इसमें रेलेवेंट डेट रहेगी सर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर। सपोज अब मेरा यूनाइटेड नेशन की कोई एम्बेसी है, उसका मेरा रिफंड अप्लाई करना है मेरे को फर्स्ट क्वार्टर का, फाइनेंशियल ईयर 1920 का। तो फर्स्ट क्वार्टर मेरा जून में खत्म हुआ सर, तो जून के बाद विद इन 6 months, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो सर दिसंबर 20 तक मैं उसका रिफंड अप्लाई कर पाऊंगा क्वार्टर 1 का। उसके बाद सर रिफंड नहीं मिलेगा। अब सर किसी ने मुझसे पूछा कि जो सर इसमें टाइम लिमिट डिफाइंड है GST एक्ट में, वो 2 साल की डिफाइंड है, कि क्या हम 2 साल के बाद भी सर रिफंड ले सकते हैं? तो माय आंसर इज नो। ऐसा क्यों सर? सर गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि ये जो GST में आपको रिफंड मिल रहा है, ये कोई आपका कंपल्सरी अधिकार नहीं है, दिस इज सब्सटैंटिव। और अगर आप देखेंगे सेक्शन में भी, सेक्शन 54 में भी ये लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर में अप्लाई द रिफंड। वहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है सर, वो मे वर्ड यूज किया हुआ है कि अगर उसकी इच्छा है, अगर उसको रिफंड चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं करना। तो वो मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सपोज मेरा टाइम लिमिट निकल गया, उसके बाद अगर मैं रिफंड फाइल करना चाहूंगा तो सर वो फाइल नहीं होगा। हाँ स्टार्टिंग में, क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे जैसे अब GST एक्ट नया था, अभी तो फिर भी काफी टाइम हो गया, पर उस टाइम पे हम एक प्ली ले सकते थे कि जी हमें नॉलेज नहीं थी या पता नहीं था, बट नॉलेज इज ऑफ नो एक्सक्यूज। तो जो टाइम लिमिट इसमें रहेगी दैट वो सर स्ट्रिक्टली 2 years रहेगी। 2 years के अंदर अंदर अगर हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो हमें रिफंड ग्रांट हो जाएगा, अदरवाइज सर रिफंड ग्रांट नहीं होगा। अब सर जैसे मैंने बताया सेक्शन 54 में सर काफी सारे सब क्लॉजेज हैं। एक जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 54 है, ये मास्टर सेक्शन है रिफंड्स के ऊपर। सेक्शन 54 में सर 11-12 सब क्लॉजेज होंगे आई गेस। उसमें से सर पहले 2 सब क्लॉजेज है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अब सर बात करते हैं सेक्शन 54(3) पे। यहाँ से जो मेन सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। तो सर इसकी ओपनिंग लाइन क्या बोलती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 की सर एक हमने डिस्कशन पीछे भी करी थी कि जब भी हमें रिटर्न, सबसेक्शन 10 क्या बोलता है, सबसेक्शन 10 बोलता है कि जब भी हमें कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है तो हमारी सारी फाइल होनी चाहिए, तो वो रिफंड की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएगी। तो सर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 10, a registered person may claim refund of any unutilized input tax credit। अब सर यहाँ पे इन्होंने खुशी वाली बात दे दी। इन्होंने बोला कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिफंड क्लेम कर सकता है कोई भी अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब इससे क्या हुआ कि हर किसी का अनयूटिलाइज मोस्टली लोगों का रहता ही है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम रिफंड फाइल कर देंगे। बट उसके बाद क्या आ गया, प्रोवाइडेड दैट no refund of unutilized input tax credit shall be allowed in cases other than। तो एक्ट ने क्या बोला कि आपको सिर्फ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड है वो 2 केसेस में मिलेगा। पहला केस जो है सर वो रहेगा जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। एंड सेकंड इज where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies। मतलब अगर कोई मेरी इनपुट सर्विस है या कोई मेरा इनपुट है या कोई मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, वो है 18% पे 28% पे, ठीक है, और उसका मेरा जो आउटपुट टैक्स मैं उसको कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चर करके जो मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो फाइनल प्रोडक्ट है सपोज 5% पे।
तो उस केस में सर ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं। उस केस में मेरे को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेरा आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा होगा कि मैं परचेज तो कर रहा हूँ 12 पे और सेल कर रहा हूँ 5 पे, तो जो मेरा डिफरेंशियल अमाउंट है 7% का, उसका मेरे को रिफंड मिल जाएगा। बट उसकी भी सर्टेन कंडीशंस है, वो हम आगे एक बार डिस्कशन करेंगे सर। अब सर इस केस में एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब सपोज मेरा कोई रॉ मटेरियल है, वो मैं परचेज कर रहा हूँ 18%, उसके बाद उसको मैं कन्वर्ट करके सेल कर रहा हूँ और वो मेरी जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो सर एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में इन्होंने स्पेसिफिकली लिख के मना कर दिया कि अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है या कोई नील रेटेड सप्लाई है, उस केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस ही क्यों ना हो। अब सपोज मेरा कोई इनपुट है वो मैं 5% पे प्रोक्योर कर रहा हूँ, बट मेरी जो फाइनल आउटपुट सप्लाई है वो 0 रेट, वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट कह लो या नील रेटेड कह लो, मेरी वो 0% है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं उसका क्रेडिट ही नहीं क्लेम कर सकता। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि ब्लॉक क्रेडिट को डील करता है, वो मेरे को स्पेसिफिकली मना करता है। अब सर इसके अंदर एक और चीज मेंशन करूंगा कि रूल नंबर 42, अगर किसी पर्सन की कोई सप्लाई है और जो कि टैक्सेबल, कोई कैसे, अब उसके सर स्पेसिफिकली एक रूल डिफाइंड है सीजीएसटी एक्ट में, दैट इज रूल नंबर 42। तो उसमें आपको प्रोराटा करना पड़ेगा जो भी आपकी इनपुट यूज हुआ है फॉर द मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सपोज अगर मेरी कोई टैक्सेबल सप्लाई 12% की है, एक मेरी टैक्सेबल सप्लाई है 0%, तो जो मेरा 12% की सप्लाई की उसमें यूज हुआ है रॉ मटेरियल, उसका मेरे को प्रोराटा करना पड़ेगा, उतना मेरे को रिफंड सर अलाउ हो जाएगा। जितना रॉ मटेरियल मेरा 0 या नील रेटेड वाली में यूज हुआ है उतना मेरे को रिफंड अलाउ नहीं होगा। उस केस में सर मेरे को जो मैंने इनपुट भी क्लेम करा है वो मेरे को इनपुट भी रिवर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को लेट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको। अब सर इसमें एक चीज और ध्यान देंगे। अब जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 54 जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था सेक्शन, मैं वहीं लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ था सर, वहां वर्ड यूज किया हुआ था एनी पर्सन। बट सर यहाँ पे अब मैं सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 पे आया हूँ। सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 मेरे को बोलता है, यहाँ पे वर्ड जो यूज किया हुआ है, यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बंदा जो कि 0 रेटेड सप्लाई कर रहा है या कोई इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर के केस में रिफंड लेना चाह रहा है, उसको प्योरली रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको कोई रिफंड ग्रांट नहीं होगा। अब सर एक बार आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 54(3) में 2 ऑप्शंस है।
Ankit ji, are you there? I think there is net issue. Ankit ji, I just called you. Sorry for interruption, ji. I just called. Sorry, participant, there is network issue at the end of the Ankit ji. He is, I just called. He's trying to get connected. आगे. Ankit ji, are you there? Yes, Ankit is there. Acha, okay ji, okay. Network issue is on the end of the Ankit ji. So screen visible? Yeah. Yes. Ji Ankit ji. जी sir.
तो सर मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बेसिकली एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मिस्टर ए एक मैन्युफैक्चरर है जो कि बुक्स बनाते हैं। अब उनको कोई रॉ मटेरियल जो चाहिए मार्केट से, अब उनके रॉ मटेरियल में क्या आएगा, फेविकोल भी आ जाएगी, पेपर भी आ जाएगा, बाकी सारी अदर आइटम्स भी आ जाएंगे सर। अब सपोज मैं लेके चलता हूँ कि फेविकोल का जो रेट है वो दैट इज 18%, पेपर का रेट है 18%, अदर आइटम्स जो उनको यूज में आती होंगी दैट इज 28%। बट उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है सर, फाइनल प्रोडक्ट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%। तो सर इस केस में क्या होगा, जब भी वो अपनी आउटपुट लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे वो हमेशा 5% के रेट पर डिस्चार्ज करेंगे। बट जो उनकी यहाँ पे कैपिटल ब्लॉकेज है या उनका जो आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा है, वो आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा है 18% पे और 28% पे। तो सर ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। अब बट सर किसी ने मुझसे पूछा कि सपोज मैं इनपुट ले रहा हूँ, फेविकोल ले रहा हूँ, पेपर ले रहा हूँ, या कोई भी इनपुट मैं ले रहा हूँ, अब मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में क्या ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर फॉल करेगा? तो सर द आंसर इज नो। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सर वो फॉल क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे सेक्शन 54(3) सब क्लॉज 2 सर वहां पे स्पेसिफिकली लिख के मना किया कि अगर आपने कोई इनपुट लिया और वो जो आपकी आउटपुट सप्लाई है दैट इज अदर देन निल रेटेड और फुली एग्जाम सप्लाई, सर वो आपको रिफंड उसमें तभी मिलेगा, तभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में वो फॉल करेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या लेके चलते हैं कि जहाँ पे आउटपुट में भी टैक्स इन्वॉल्व है और मेरा इनपुट में भी टैक्स इन्वॉल्व है, तभी वो मेरा केस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल करेगा सर, अदरवाइज वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल नहीं करेगा। अब सर इसका एक का प्रोसीजर क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। रिफंड क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर शैल बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर इन फॉर्म जीएसटी RFD 01A। इसकी जो सर हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है वो फाइल होगी फॉर्म RFD कॉमन जीएसटी पोर्टल पे सर। जैसे ही हम वो एप्लीकेशन सर फाइल करेंगे, जीएसटी पोर्टल एक हमें ARN जनरेट कर देगा। ARN की हमें कॉपी लेके और बाकी सारी वर्किंग्स लेजिस्लेशन करके पड़ेगी। बीच में सर अगर आप लोगों ने सब सुना हो, कभी सुना हो, बीच में एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि जितने भी फाइलिंग्स है उसमें पहले आपको सारे के सारे जो भी आपने इनपुट्स की इनपुट सर्विसेज थी वो सारे की सारी आपको इनवॉइसेस की प्रिंट आउट देने पड़ेंगे, और जो भी बाकी आपकी वर्किंग्स है वो सारे प्रिंट आउट देने पड़ेंगे। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं, वो सारी वर्किंग्स आपको देने की जरूरत नहीं है, आप अगर उनको ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपलोड कर देंगे उससे भी काम चल जाएगा। तो सर ये भी सिचुएशन अभी डाइसी है, क्योंकि कुछ एक डिपार्टमेंटल ऑफिस हैं वो कॉपीज इंपोर्टिंग के तौर पे, और कुछ एक डिपार्टमेंट्स हैं कुछ एक स्टेट्स में जो कि बोलते हैं कि आप अगर ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर देंगे तो उससे भी चल जाएगा। Where the application relates to refund of input tax credit, the electronic credit ledger should be debited by the applicant by an amount equal to the refund so claimed as per Rule 89। सर रूल 89 क्या बोलता है? रूल 89 बेसिकली मेरा कैलकुलेशन का रूल है। जितनी भी मेरी फंड की कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला मेरा रूल 89 में डिफाइंड है। इसमें ये क्या बोल रहा है कि सपोज अगर मैंने 1 लाख रुपए का रिफंड अप्लाई किया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, तो उतनी अमाउंट ही मेरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगी। अब सपोज सर लेके चलते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए का रिफंड अप्लाई किया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, अब मेरा 1 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उसी टाइम निकल जाएंगे, जिसकी कॉपी डिपार्टमेंट को भी आपने रिफंड अप्लाई कर दिया। अब सपोज डिपार्टमेंट ने 3 केस लेके चलते हैं। पहला केस कि डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा आपका 1 लाख रुपए का रिफंड अलाउ कर दिया। सेकेंड केस आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया 1 लाख का। थर्ड केस कि आपका पार्शियल रिफंड अलाउ हो गया, पार्शियल रिजेक्ट हो गया। तो इस केस में क्या रहेगा कि जैसे ही आपका रिफंड अलाउ होगा उस केस में आपके ऑलरेडी क्योंकि अमाउंट डेबिट थी तो फर्दर कोई एक्शन नहीं होगा सर। जैसे ही आपका सर रिफंड रिजेक्ट हो जाएगा तो पार्शियल वाले सर जितना भी आपका रिजेक्ट हुआ, सपोज 1 लाख में से आपका रिजेक्ट, आपको एक डिक्लेरेशन मांगेगा डिपार्टमेंट कि आप इसके अगर अपील फाइल कर रहे हैं तो सर ये रहेगी अमाउंट, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट डिपार्टमेंट आपसे फिर अंडरटेकिंग लेगा कि अगर आप इसकी फर्दर अपील फाइल नहीं करते, आपको लगता है कि
हाँ आपकी गलती थी या उस पर्टिकुलर चीज का मेरे को रिफंड नहीं मिलना चाहिए था जो मेरे को डिसअलाउ हुआ है, उससे डिपेंड आपकी अंडरटेकिंग लेगा कि आप फर्दर कोई अपील में नहीं जा रहे। जैसे आप वो अपील सबमिट करेंगे, जो रिमेनिंग आपकी अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपकी दोबारा से आ जाएगी, और रिमेनिंग जो 50% आपकी अमाउंट होगी उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइंग फॉर रिफंड मस्ट गिव एन अंडरटेकिंग, जैसे मैंने बताया था कि अंडरटेकिंग चाहिए होगी सर। ये चीज भी कहाँ डिफाइंड है सर, रूल्स में डिफाइंड है। द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइंग फॉर रिफंड must give an undertaking to the effect that the amount of refund sanction would be paid back to the government. सर क्या है कि जब भी ये डिपार्टमेंट की एक अपनी डॉक्यूमेंटेशन है कि जब भी आप अपना रिफंड अप्लाई कर रहे हैं वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेंगे, टैक्स पेयर से अंडरटेकिंग लेंगे कि अगर आपका रिफंड जो आपको सैंक्शन करना नहीं बनता था और अगर आपको गलती से वो सैंक्शन हो गया और आपको वो पे हो गया, कल को जब ये पता चला तो आपको वो अमाउंट गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी, और दैट टू विद इंटरेस्ट in case it is found subsequently that the statutory requirements of CGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded. तो सर इस केस में भी जैसे यही है कि द रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म GST RFD 018, ये सर एक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर ये एप्लीकेशन जाएगी इन्वर्टेड की रिफंड्स needs to be filed within from the end which such a refund claim for the refund in which such claim for the refund arises. तो जो ये लिखा है विद इन 2 एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब सर ये मैं कर रहा हूँ पुराने, इसमें क्या है सर, एक अमेंडमेंट आई है रिसेंटली। अमेंडमेंट से क्या बोलती है, पहले इसमें पीरियड क्या था, विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब सपोज मेरा कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड है, मेरा रिफंड फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च, उसका जो for this मैं लेके चलता था जिनसे पूछ रहा हूँ रिफंड क्योंकि जुलाई 17 से अगर मैं लेके चलूँ 2 साल तो जुलाई 9 तक होता है, बट क्योंकि लॉ में क्या लिखा हुआ था, लॉ में सर ये लिखा हुआ था कि विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर सर मेरा एंड हुआ मार्च 19 में, तो सर उस केस फॉर द फाइनेंशियल मार्च 18 में मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो सर उस केस में मेरा जो ड्यू डेट बन रही थी वो बन रही थी मार्च 20, और उस केस में मुझे क्या मिल रहा था, बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा था कि मेरा जुलाई से लेके जितना भी रिफंड है, आप ये लगा के चलो कि 2.5 साल का जुलाई से मैं सारा का सारा रिफंड मार्च 20 तक फाइल कर सकता हूँ। अब सर इस केस में काफी क्वेरीज भी आई थी पीछे कि क्योंकि इस केस में रेलेवेंट डेट क्या बननी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया, एक अमेंडमेंट 2019 में, और इसमें एक जब भी आप ये 2 years देखेंगे तो 2 years आप देखेंगे विद फ्रॉम द एंड ऑफ द फ्रॉम द एंड ऑफ द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो भी आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उसकी ड्यू डेट जो भी रहेगी उससे आप 2 years देखेंगे। अब सपोज मेरा जुलाई 2018 का रिफंड है, अब जुलाई 2018 का जो मेरा रिफंड है उसके एज पर दिस लाइन उसकी जो ड्यू डेट बनेगी वो बननी चाहिए, जुलाई 18 का है तो फाइनेंशियल ईयर मेरा खत्म हुआ मार्च 19 में, तो मार्च 21 उसकी ड्यू डेट बननी चाहिए, बट गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन के थ्रू क्या बोला कि आपकी जो ड्यू डेट बनेगी वो बनेगी जुलाई 19 जुलाई 20, तो जुलाई 20 दैट विल बी द ड्यू डेट। अदरवाइज मैं पहले क्या लेके चल रहा था मार्च, तो अब 6 महीने मेरे कम हो गए, तो ये थोड़ी मेजर अमेंडमेंट आई है सर इस केस में। अब रेलेवेंट ईयर इन विच सच रिफंड अराइजेस, अब रेलेवेंट डेट क्या है सर, द सेम गॉट अमेंडेड थ्रू द सेंट्रल गुड्स एंड 18 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st 2019 सर। ये मैंने एक वर्बैटिम उसका रिप्रोड्यूस किया है जो भी अमेंडमेंट आई है। अब इसमें सब क्या लिखा है, फॉर सब क्लॉज ई, सर सब क्लॉज ई में जो डिफाइंड है वो है रेलिवेंट डेट डिफाइंड है इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। फॉर सब क्लॉज ई द फॉलोइंग सब क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ई में क्या बोलता है सर, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सब अंडर क्लॉज 2, क्लॉज 2 में सर क्या लिखा हुआ था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाया था सेक्शन 54 में,
ये सर 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 में जो मेरी चीज डिफाइंड है दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो केस है सर। In the case of refund of unutilized input tax credit under clause 2 of the first proviso to subsection 3, the due date for furnishing of the return under section 39 for the period in which said claim for refund arises. मतलब अब जो मेरी रिटर्न की सर ड्यू डेट बनेगी वहां से मेरे को 2 साल काउंट करने पड़ेंगे। पहले क्या हो रहा था कि फाइनेंशियल ईयर के एंड से काउंट करने थे, अब मेरे को जो रिटर्न की ड्यू डेट है वहां से 2 साल काउंट करने पड़ेंगे सर। एक ये अमेंडमेंट आई है सर। अब दोबारा चलते हैं सर एक्सपोर्ट्स के केस में। एक्सपोर्ट्स में क्या है कि सर जीरो डेटेड सप्लाई है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। अब डेस्टिनेशन में क्या है, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट के केस में जो मेरी डेस्टिनेशन इस केस में सर जो मेरी प्लेस बनेगी वो डेस्टिनेशन बनेगी दैट इज आउट ऑफ इंडिया। तो since in export the destination of goods and services are outside India, hence the GST. Otherwise imports are taxable because destination is in India. अब सर एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं कि सपोज एक एक्सपोर्टर है जो कि दिल्ली बेस्ड एक्सपोर्टर है, उसने अपना एक्सपोर्ट किया गुड्स यूके में। अब वो एक्सपोर्ट करने के लिए वो इनपुट्स भी ले रहे हैं, इनपुट सर्विसेज भी ले रहे हैं और कैपिटल गुड्स भी ले रहे हैं सर। अब सर मेरा क्वेश्चन है वेदर एक्सपोर्टर इज लायबल फॉर रिफंड ऑफ जीएसटी पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट्स, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। सर प्लीज सर चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर होगा इसका। सर बेसिकली क्या है कि एक्सपोर्ट्स के केस में जैसे मैंने बताया रेलेवेंट डेट का कंसेप्ट, रिफंड के केस में रेलेवेंट डेट हर एक केस में डिफरेंट है। ऐसे ही इसके केस में भी जो हमारे इनपुट्स मिलेगा, चाहे वो रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूं, अगर मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करूं, उसमें भी जो मेरे को रिफंड्स मिलेगा वो डिफरेंट चीजों पे मिलेगा। अब एक्सपोर्ट्स में अगर मैं लेके चलूं तो एक्सपोर्ट्स के केस में मुझे जो रिफंड मिलेगा वो मिलेगा सर इनपुट्स का और इनपुट सर्विसेज का। इसमें कैपिटल गुड्स का मैं रिफंड नहीं क्लेम कर पाऊंगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बट सर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में मेरे को इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड नहीं मिलेगा और कैपिटल गुड्स का भी मेरे को रिफंड नहीं मिलेगा। उस केस में मैं सिर्फ इनपुट्स का रिफंड लेके चलूंगा। अब सर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, एक प्रैक्टिकल केस था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ही। एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, अपनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, उसमें अपनी वो लेबर की सर्विसेज भी दे रहा है और बाकी जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है वो भी दे रहा है। और इन रिटर्न सर अब वो क्या कर रहा है कि अपनी बाकी सर्विसेज भी क्लेम कर रहा है, उसमें इनपुट्स भी क्लेम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप कह लो सरिया, सीमेंट और बाकी सब चीजें, और इनपुट सर्विसेज भी सर वो क्लेम कर रहा है और कैपिटल गुड्स भी क्लेम कर रहा है। कैपिटल गुड्स का तो सर हर तरफ डिनाइड है कि कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये सर इन्वर्टेड का मैं केस बता रहा हूँ। अब जैसे वो जो उसकी आउटपुट सप्लाई है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% और 12% एज द केस में भी, और जो उसकी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज आ रही हैं, वो इनपुट सर्विसेज आ रही हैं उसको रेट पे 18% के रेट पे और 28% के रेट पे। अब सर उस केस में क्या हुआ है कि एक एडवांस रूलिंग को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस केस में। टाटा डाइवू की एक एडवांस रूलिंग आई है फ्रॉम द महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग। उस केस में उन्होंने क्या बोला कि जो भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ये केस है उस केस में टैक्स पेयर को इनपुट्स का भी रिफंड मिला हो जाएगा और इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड मिला हो जाएगा। अब ये दोनों चीजें, अब एक्ट क्या बोलता है, एक्ट मेरे को बोलता है कि इन्वर्टेड के केस में आपको सिर्फ इनपुट्स का रिफंड मिलेगा, बट एडवांस रूलिंग मेरे को बोलती है कि इनपुट्स का भी मिल जाएगा, इनपुट सर्विसेज का भी मिल जाएगा। तो सर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है और सब्जेक्ट टू लिटिगेशन मैटर है, तो जैसे भी ये डिसाइड होगा इन फ्यूचर तो एक बार इसको तब डिस्कस करेंगे। अब सर इसमें कुछ एक कंपनी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिफंड के साथ साथ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले केस में हमें डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, तभी वो रिफंड सैंक्शन होगा। सर सबसे पहले कॉपी ऑफ एलयूटी, जो भी हमने एलयूटी फाइल करी है, क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला केस है
तो जो भी हमने एलयूटी फाइल करी है उसकी कॉपी जाएगी सर। कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द टैक्स पेयर। अब सर अंडरटेकिंग जैसे मैं बता रहा था कि अंडरटेकिंग जाएगी कि अगर कोई भी आपको गलत रिफंड सैंक्शन हो जाता है तो कल को आप वो डिपार्टमेंट को रिफंड कर दोगे, डिपार्टमेंट को वो पैसा वापस दे दोगे विद इंटरेस्ट, उसकी एक अंडरटेकिंग जाएगी सर। कॉपीज ऑफ FIRC सर। FIRC क्या होती है सर? फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स। जो भी मैंने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट के केस में जितनी भी मेरे को फॉरेन से रेमिटेंस आएगी उसकी सारी कॉपीज मेरे को डिपार्टमेंट को सबमिट करवानी पड़ेगी सर। एज पर RBI एक्ट और फेमा एक्ट जैसे हम कह सकते हैं कि उसका जो सर टाइम लिमिट डिफाइंड है, वो टाइम लिमिट डिफाइंड है 1 ईयर का सर। 1 ईयर के अंदर अंदर अगर सपोज मैंने आज मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और आज से विद इन 1 ईयर मेरे को वो पेमेंट आ जानी चाहिए। अगर तो वो पेमेंट मेरे को विद इन 1 ईयर आ गई तो वो सर ट्रांजेक्शन रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाएगी। बट अगर मेरे को वो पेमेंट नहीं आई विद इन 1 ईयर तो वो ट्रांजेक्शन रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होगी। उसके बाद सर कॉपी ऑफ फॉर्म GST RFD 01। ये भी सर वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि GST कॉमन पोर्टल से जनरेट होगा। और उसके बाद सर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें जो है वो है एक स्टेटमेंट जाएगी एनेक्जर बी। एनेक्जर बी में क्या होगा सर? जितनी भी आपने इनपुट सर्विसेज दी है उसकी बिल वाइज डिटेल जाएगी। उसका आपको बिल नंबर, बिल डेट, पार्टी का GSTN वो सब उसमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो टोटल होगा वो आपकी बुक्स के साथ भी मैच होना चाहिए कि आपकी बुक्स में भी वो एंट्रीज होनी चाहिए। और प्लीज नोट दैट द रिफंड ऑफ कैपिटल गुड्स इज नॉट अलाउड इन दिस केस। सर जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि रिफंड्स में जो सेक्शंस है सेक्शन 54 से लेके 58 तक जाते हैं। मेन जो हमारा मास्टर सेक्शन है दैट इज सेक्शन 54। ऑलमोस्ट उसमें सारी चीजें सर कवर हो गई हैं सेक्शन 54 में। अब सेक्शन 55 सर क्या बोलता है? सेक्शन 55 मेरे को बोलता है रिफंड इन सर्टेन केसेस। वो सर्टेन केसेस कौन से हैं सर? जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, UN एम्बेसी वाला, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन वाला, CSD कैंटीन्स वाला। उस केस में सर मेरे को वो सारी चीजें डिफाइंड है सेक्शन 55। तो सेक्शन 55 भी बोलता है कि आप इस केस में अपना रिफंड ले सकते हैं प्रोवाइडेड आपको क्वार्टरली एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अकम्पनीड विद फॉर्म GSTR RFD 10 एंड GSTR 11। उसके बाद सर सेक्शन 56 पे आते हैं। सेक्शन 56 में को बोलता है, मतलब ये बहुत मिनिमल से सेक्शन है, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, मेन इंपॉर्टेंट 54 ही है। तो सेक्शन 56 में को क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स। अगर सपोज मैंने आज कोई रिफंड अप्लाई किया तो प्रॉपर ऑफिसर को विद इन 15 डेज उस पर कोई एक्शन लेना है, इधर वो मेरा रिफंड एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। अब सपोज उसने मेरा रिफंड, चलो वो बाद में लेके चलते हैं कि रिफंड एक्सेप्ट किया रिजेक्ट किया, उसके पास प्रॉपर ऑफिसर के पास 60 डेज का टाइम है रिफंड को प्रोसेस करने का। अगर वो विद इन 60 डेज रिफंड प्रोसेस हो जाता है तो सर उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट अगर वो इंटरेस्ट आपको तभी मिलेगा अगर 60 डेज के अंदर अंदर रिफंड प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद सर सेक्शन 57, और इसमें सर जो सॉरी इंटरेस्ट में जो रेट्स डिफाइंड है वो सर 6% है और 9% है, दोनों अलग अलग केसेस में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सर सेक्शन 57 पे चलते हैं। सेक्शन 57 है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। इसमें सर क्या बोलता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को कुछ लगता है कि रिफंड जो है टैक्स पेयर को नहीं मिलना चाहिए या बहुत टाइम से पेंडिंग है कुछ भी, और उनको लगता है कि कुछ एक अमाउंट इसमें ऐसी है कि वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर होनी चाहिए, तो प्रॉपर ऑफिसर उस अमाउंट को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में भी ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद सर सेक्शन 58 बोलता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जो भी अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हुई है फर्दर उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, दैट इसमें वो लाइन लिखी हुई है कि उसको कैसे यूटिलाइज होगा। अभी फिलहाल उसमें कुछ नोटिफाइड नहीं है, इसमें यही लिखा है कि एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल कैलेंडर। जैसे कुछ नोटिफाई होगा सर उसमें वो कुछ चीजें पता लग जाएंगी। तो बेसिकली ये है कि सेक्शन 54 जो डील करता है वो रिफंड्स को केसेस को डील करता है कि आपके कौन कौन से केसेस बनेंगे रिफंड के, कब कब आपकी रेलेवेंट डेट बनेगी, एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो डिफाइंड होती है, और कितने केसेस आपके रिफंड के होंगे। रिफंड इन सर्टेन केसेस में सर एक स्पेशल केस हमारा UN मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो चीज है। आफ्टर 61st डे आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपका रिफंड अमाउंट नहीं क्रेडिट होती है बैंक में। अब सर इसके केस में मैं कब कह सकता हूँ कि अब सपोज आज मैंने रिफंड अप्लाई करा, आज है 19th ऑफ अप्रैल, अब सपोज मेरे को 25th ऑफ अप्रैल को मेरा रिफंड सैंक्शन हो गया सर। अब जो मैं रिफंड देखूंगा या इंटरेस्ट देखूंगा वो मैं कब से देखूंगा कि फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ द अमाउंट या फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट इन माय बैंक अकाउंट सर।
तो सर इस केस में मैं देखूंगा फ्रॉम द जो रेलेवेंट डेट इस केस में मेरी रहेगी वो रहेगी फ्रॉम द डेट द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन माय बैंक अकाउंट। इससे पहले जो भी चीजें होती रही, चाहे वो मेरा रिफंड सैंक्शन हो, चाहे वो कोई एडवाइस के थ्रू एडजस्टमेंट हो, कुछ भी हो, उसके केस जब तक मेरे को अमाउंट मेरे बैंक में नहीं मिली तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को रिफंड मिले। तो ये सारा प्रोसीजर सर इसमें है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड अगेन में कि कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी, उसकी यूटिलाइजेशन सर। अब सर ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने बताया कि जो एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 54, उसमें सर रेलेवेंट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन डिफाइंड है। ये सर मेरे कुछ केसेस हैं जो कि मेरे रिफंड के केसेस हैं। अब सपोज मेरा एक्सपोर्ट का केस है, बोथ विद पेमेंट एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर तो मेरा सी के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा है तो द डेट ऑन विच द शिप लीव्स इंडिया वो मेरी रेलेवेंट डेट बन जाएगी। अब सपोज आज मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, मेरा कोई गुड्स है वो बाय सी रूट मेरा एक्सपोर्ट हो, आज मैंने वो इनवॉइस बना दिया, वो इनवॉइस वगैरह बना के आज है 19, अब वो मेरा चला गया कस्टम स्टेशन पे। कस्टम स्टेशन के बाद जिस दिन शिप ईजीएम फाइल करेगी, ईजीएम मींस एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वो सर डेट होती है कि हाँ अब हम ये सामान लेके बाहर जा रहे हैं फाइनली। वो डेट सर मेरी बनेगी जिस दिन शिप लीव करेगी, जिस दिन ईजीएम फाइल होगा वो डेट बनेगी मेरी रेलेवेंट डेट। उस डेट से अब सपोज ईजीएम फाइल हुआ 25 ऑफ अप्रैल को, तो 25 ऑफ अप्रैल से लेके नेक्स्ट 2 इयर्स में काउंट करूंगा, वो मेरी रेलेवेंट डेट बनेगी और वो मेरा रिफंड का पीरियड बनेगा सर। ऐसे ही सर बाय एयर, अगर मैं एयर के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो जिस दिन वो एयरक्राफ्ट इंडिया से लीव करेगा वो मेरी रेलेवेंट डेट बनेगी सर। बाय लैंड, अगर मेरा लैंड रूट के थ्रू सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो जिस दिन वो गुड्स पास करेंगे कस्टम फ्रंटियर को वो मेरी रेलेवेंट डेट बनेगी सर। और अगर मेरा पोस्ट के थ्रू सामान जा रहा है, कोई कोरियर के थ्रू या कुछ भी, तो जिस दिन वो डिस्पैच होगा सर उस दिन मेरी वो रेलेवेंट डेट बनेगी। ये तो सर था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जो रेलेवेंट डेट है। अब मेरा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में सर। अब सप्लाई है मेड प्रायर टू द रिसीट ऑफ मनी। अब सपोज सर सर्विसेज के केस में क्या होता है, हो सकता है मुझे पेमेंट पहले आ गई या मेरा इनवॉइस पहले चला गया, तो जब भी सर केस बनेगा कि सप्लाई मेड प्रायर टू द रिसीट ऑफ मनी, दैट मींस कि मेरा इनवॉइस तो पहले इशू हो गया बट मेरी जो पेमेंट आई है वो बाद में आएगी सर, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बनेगा सर इस केस में रेलेवेंट डेट। अब सर सेकंड केस इसमें है कि सप्लाई मेड प्रायर टू द इशू ऑफ इनवॉइस, कि मतलब मेरे को पेमेंट तो पहले मिल गई है बट मेरा जो इनवॉइस है वो बाद में आया, तो इस केस में रेलेवेंट डेट्स जो सर बनेगी वो बनेगी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो सर अगर मैं इसको एक करक्स में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज लेटर वो मेरी रेलेवेंट डेट बनेगी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द पीरियड टू विच द रिफंड pertains, जैसे मैंने बताया कि अमेंडमेंट आई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2019, तो जो भी आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है उस डेट से विद इन 2 इयर्स आप देखेंगे जो रेलेवेंट डेट है वो मानी जाएगी सर। प्रोविजनल असेसमेंट सर, प्रोविजनल असेसमेंट मैंने पहले कवर नहीं किया सर। प्रोविजनल असेसमेंट बेसिकली क्या चीज है कि अब सपोज मुझे नहीं पता था कि इस पे क्या मेरा रेट लगना था या मेरी कोई जो आइटम थी या मेरी कोई नेचर ऑफ सप्लाई थी वो डिस्प्यूटेड थी, तो मैंने उसकी असेसमेंट करके उस पर पहले टैक्स दे दिया। अब सपोज बाद में वो असेसमेंट कंप्लीट हुई और उस पर जो टैक्स मैंने सपोज दे दिया 18%, बाद में वो असेसमेंट कंप्लीट हुई, उस पे कंप्लीशन में मुझे गवर्नमेंट ने बताया कि जी आपका जो रेट है वो बनेगा 12% का, तो जो मेरा रिमेनिंग 6% का जो मैंने एक्सेस टैक्स पे किया हुआ है उस केस में सर वो मैं अगर रिफंड अप्लाई करूंगा, और वो रिफंड मैं कब से अप्लाई करूंगा, द डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट, जब मेरे को फाइनल ऑर्डर मिल जाएगा कि मेरा 12% का रेट है, उस डेट से लेके विद इन 2 इयर्स वो मैं रिफंड फाइल कर सकता हूँ सर। उसके बाद है सर जजमेंट असेसमेंट अपील। अगर सपोज मेरा कोई ऑर्डर अपील के थ्रू मेरे को मिला या मेरी कोई असेसमेंट पेंडिंग थी, मैं वो केस जीत गया, तो जिस दिन वो मेरे को ऑर्डर मिला या जिस दिन वो मेरी जजमेंट कंप्लीट हुई उस दिन से लेके नेक्स्ट 2 इयर्स तक मैं वो रिफंड फाइल कर सकता हूँ सर। बाकी सर डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है और अदर केसेस हैं। डेट ऑफ पेमेंट अदर केसेस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन मैंने वो टैक्स पे किया, अगर कोई भी चीज यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो जिस दिन मैंने टैक्स पे किया होगा वो मेरी सर रेलेवेंट डेट बन जाएगी उसके केस। अब सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज जो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वो है रिफंड फाइलिंग प्रोसेस। ये एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल टॉपिक भी है रिफंड फाइलिंग प्रोसेस का, तो इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू कवर करा है। फ्लो चार्ट है सर ये,
अब क्या होता है कि सबसे पहले मैं अपनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करता हूँ इन फॉर्म RFD 01 से। अब उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को विद इन 15 डेज सर ये दो चीजें इशू करनी होती है, ईदर ऑफ द टू, या तो वो मेरी एक्नॉलेजमेंट इशू कर दे इन फॉर्म RFD 02। अगर मेरा फॉर्म RFD 02 सर इशू हो गया, दैट मीन्स कि मेरा रिफंड एक्सेप्ट हो गया और अब वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जैसे भी है वो कंटिन्यू होगा। और या तो सर उसमें होगा इशुएंस ऑफ डेफिशिएंसी मेमो इन फॉर्म RFD 03। सर डेफिशिएंसी मेमो मेरा तब इशू होता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इसके अंदर कुछ कमी थी या कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सपोर्टिंग चीज, कोई सपोर्टिंग फाइल इसमें अटैच नहीं थी, तो वो मेरे को डेफिशिएंसी मेमो इशू कर देंगे इन फॉर्म RFD 03। सर कोई भी वो, चाहे वो डेफिशिएंसी मेमो हो या कोई भी एक्नॉलेजमेंट अगर इन्होंने इशू करनी है, वो इशू उनको करनी है विद इन 15 डेज। अगर 15 डेज तक सर इन्होंने इशू नहीं की वो फाइल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, तो दैट वुड बी डीम्ड कि वो एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई है, तो RFD 02 डीम माना जाएगा कि इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट। बट सर अब इस केस में एक चैलेंज है। इस केस में चैलेंज क्या है डेफिशिएंसी मेमो के केस में, कि अगर डेफिशिएंसी मेमो इशू हो गया, इस केस में मैं ये नहीं कहूंगा, प्रॉपर ऑफिसर ने कहा कि जी आपने अंडरटेकिंग्स नहीं सपोज अटैच करे। अब मैंने क्या किया कि अंडरटेकिंग्स दोबारा बनाई और मैं दोबारा अंडरटेकिंग्स अटैच करने लगा, तो अब वो मेरे को अटैच करने का ऑप्शन ही देगा सर ऑनलाइन पोर्टल पे। उस केस में मुझे दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, दोबारा से मैं ये RFD 01 फाइल करूंगा। जिस दिन मैं RFD 01 फाइल करूंगा, अब क्या होता है कि जैसे इनकम टैक्स में होता है कि अगर मैंने मान लो आज की डेट में रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद मैं रिटर्न रिवाइज कर देता हूँ और दोबारा से रिटर्न फाइल कर देता हूँ, तो जो मेरी ओरिजिनल डेट है वही मेरी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बन जाती है। बट इस केस में सर ऐसा नहीं है। इस केस में अगर सपोज आपने आज ही रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी, ठीक है, डिपार्टमेंट ने लेके चलते हैं कि 25 अप्रैल को डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दे विद इन 15 डेज टाइम, तो आपको दोबारा से ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी RFD 01 में। और आप उसमें ये नहीं कर सकते कि मैंने डेफिशिएंसीज हटा दी है, तो मेरा उसी डेट से माना जाएगा जिस डेट से आपने जिस डेट को मैंने ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की थी। अब सर इसमें चैलेंज क्या आएगा? चैलेंज ये आएगा कि जैसे मैंने बताया कि मार्च बेसिकली जो ड्यू डेट है 2 इयर्स की, वो लेके चलते हैं कि कोई रिफंड की जो लास्ट डेट थी वो बनती थी मार्च 21 में। अब मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी 20 मार्च 2021 में। डिपार्टमेंट ने क्या किया, मेरे को RFD 03 इशू कर दिया 25 को, ठीक है। अगर तो मैंने क्या किया कि अब दोबारा से मेरे को रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है, अब उस केस में अब मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी सपोज 3 अप्रैल को आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ड्यू डेट, तो जो मेरी फ्रेश एप्लीकेशन मानी जाएगी वो 3 अप्रैल से ही मानी जाएगी। उसमें मैं ये प्ली नहीं ले सकता कि जी मैंने तो पहले फाइल कर दी थी और ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी थी, क्योंकि इस केस में आपका क्या होगा, रिफंड टाइम बार्ड हो जाएगा, तो वो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो सर इस केस में मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी हम एप्लीकेशंस या जो भी हम रिफंड एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, उसके लिए काइंडली लास्ट मंथ की वेट ना करते हुए उसको पहले ही फाइल कर दें, क्योंकि लास्ट मंथ में मोस्ट ऑफ द केसेस में डेफिशिएंसी मेमो इशू होना ही होना है। अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत सारे रिफंड के केसेस हैंडल किए हो, तो एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि हाँ किस केस में वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। बट हाँ, अगर हम फर्स्ट टाइम कोई रिफंड अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही रेयर केसेस हैं कि हमें डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगी, कहीं ना कोई डेफिशिएंसी रह जाती है सर। तो ताकि वो टाइम लिमिट क्रॉस ना हो, रिफंड टाइम बार्ड ना हो, तो उस चीज को देखते हुए सर अब से मैं ये लेके चलता हूँ कि सपोज मेरे को रिफंड एप्लीकेशन में एक्नॉलेजमेंट इशू हो गया RFD 02 में। उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद मेरे को सर ऑर्डर इशू होगा, इशुएंस ऑफ रिफंड ऑर्डर इन RFD 06। अब सर RFD 06 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे को सिर्फ ऑर्डर मिला है। इसका मतलब सर ये नहीं है कि मेरे को रिफंड ग्रांट हो गया है, रिफंड बैंक में मिल गया। जैसे ही सर आपको RFD 06 इशू होगा, उसके बाद फर्दर या तो आपको पेमेंट एडवाइस इशू हो जाएगी, जो कि वो डिपार्टमेंट क्या करता है, ट्रेजरी में इसको भेज देता है। ट्रेजरी में RFD 05 भेजता है कि आप इनके बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट क्रेडिट कर दो। अब उसकी जगह सर सपोज मेरे को रिफंड ऑर्डर इशू हो गया, उसके बाद फर्दर क्या हो सकता है मेरे को वो एडजस्टमेंट एडवाइस इशू कर दे इन फॉर्म RFD 07। एडजस्टमेंट एडवाइस का सर क्या मतलब है कि सपोज मेरी कोई पहले डिमांड आउटस्टैंडिंग थी 1 लाख रुपए की, मेरा जो रिफंड था वो 2 लाख रुपए का था। उसमें अब वो डिपार्टमेंट मुझे क्या करेगा कि 1 लाख रुपए का तो मुझे RFD 05 इशू कर देगा, पेमेंट एडवाइस की 1 लाख रुपए की मेरे को पेमेंट कर दो, और 1 लाख रुपए पे रिमेनिंग अमाउंट को मेरी एडजस्टमेंट एडवाइस इशू कर देगा इन फॉर्म RFD 07। अब सपोज सर एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई है। अब एक्नॉलेजमेंट इशू होने का ये मतलब, एक्नॉलेजमेंट इशू हो गई है, एक्नॉलेजमेंट इशू के बाद
अब हो सकता है कि उसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर को लगे कि इन्होंने जिस चीज का रिफंड अप्लाई किया है वो चीज का रिफंड नहीं मिलना चाहिए था, तो वो आपको एक शोकोज नोटिस भी इशू कर सकता है। शोकोज नोटिस होगा फॉर्म RFD 08 में से, वो आपको हियरिंग के लिए बुलाएंगे। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि ये वाली जो आइटम है, पर्टिकुलर आइटम, रादर इट बी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, कि इसका रिफंड आपको क्यों ग्रांट किया जाए या क्यों ग्रांट ना किया जाए, वट एवर बी द केस। तो उस केस में सर एक शोकोज नोटिस इशू होगा। विद इन 15 डेज सर आपको RFD 08 का रिप्लाई देना है, इनफॉर्म RFD 09 रिप्लाई टू शोकोज नोटिस। सर सभी केसेस में ये RFD 08 या 09 इशू नहीं होगा, 08 इशू नहीं होगा। अब एक प्रैक्टिकल क्वेरी आई थी कि सर फॉर्म RFD 08 तो इशू हो गया, बट मैं उसका रिप्लाई कहाँ पे करूँ कि रिप्लाई का तो ऑनलाइन कहीं ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो सर जब भी आपको SCN इशू होगा फॉर्म RFD 08 में, ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई की विंडो भी ओपन हो जाएगी फॉर्म RFD 09 में। अगर RFD 09 की विंडो ओपन नहीं होती है तो या तो वो हेल्प डेस्क पे एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसका मैन्युअली भी रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। ये सर पूरा रिफंड एप्लीकेशन का प्रोसीजर रहेगा। अब सपोज आपने रिप्लाई इशू कर दिया, रिप्लाई प्रॉपर ऑफिसर को दे दिया, अब उसके पास फर्दर क्या ऑप्शन है, या तो वो आपका रिफंड रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, या आपका रिफंड अप्रूव कर देगा। तो सर अगर वो अप्रूव करेगा तो वापस हम सर यहीं आ जाएंगे इशुएंस ऑफ रिफंड ऑर्डर में, आपको RFD 06 इशू हो जाएगा। और अगर आपका फिर रिफंड रिजेक्ट हो गया तो दोबारा से आपको ये रिफंड एप्लीकेशन दोबारा फाइल करनी पड़ेगी सर। ये सर एक पूरा फ्लो चार्ट था कि कैसे कैसे मेरी रिफंड एप्लीकेशन मूव होती है, वेदर इट विल बी द केस ऑफ एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, नॉर्मल अगर मैं बात करूं एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इन द कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, वट एवर बी द केस। ये एक पूरा फ्लो चार्ट है, मास्टर फ्लो चार्ट, जिसके थ्रू रिफंड मूव होंगे या रिफंड एप्लीकेशन मूव होगी सर। अब सर इसमें 2-3 प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं कि वंस एन एक्नॉलेजमेंट हैज बीन इशूड, एक बेसिकली ये सर्कुलर आया था और रिसेंटली एक अमेंडमेंट भी आई थी। जो अमेंडमेंट आई है सर ये मैंने इसमें मार्क कर दी है रेड में। वंस एन एक्नॉलेजमेंट हैज बीन इशूड इन रिलेशन टू अ रिफंड एप्लीकेशन, नो डेफिशिएंसी मेमो ऑन एनी ग्राउंड्स मे बी सब्सिक्वेंटली इशूड। अब सपोज मेरे को एक रिफंड, मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट इशू हो गया। एक्नॉलेजमेंट से मेरा मतलब है RFD, जैसे मैंने पीछे वाले केस में बताया RFD 03, सॉरी 02 सर, इशुएंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट मेरे को इशू होगी RFD 02। अगर एक बार मेरे को एक्नॉलेजमेंट इशू होगी है तो प्रॉपर ऑफिसर मेरे को उसके बाद डेफिशिएंसी मेमो नहीं इशू कर पाएगा वो। ये सर कहाँ पे चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है सर पैरा नंबर 9 ऑफ सर्कुलर 124/44/2019 डेटेड 18th November 2019। सर जब भी हम रिफंड्स की बात करेंगे हमेशा सर्कुलर को ध्यान में रखेंगे सर, ये एक मास्टर सर्कुलर है। अगर कोई भी आपको कोई आंसर चाहिए, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये सर्कुलर ऐसा सर्कुलर है जो कि मोस्टली आइटम्स है जो रिफंड रिलेटेड वो सब चीजें कवर करता है सर। सेकेंडली सर, अ रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड आफ्टर करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया सर, अगर मान लो उसने डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दिया DRC 03 में, उसके बाद आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, फ्रेश एप्लीकेशन is treated as a fresh refund application. Such a rectified refund application submitted after the correction of deficiencies shall also have to be submitted within 2 years. That means जैसे हमारे एग्जांपल में था कि अगर मैंने कोई ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करी 20 मार्च को, मेरे को डेफिशिएंसी इशू होगी 25 मार्च को, उसके बाद मैंने दोबारा से सारा कुछ करेक्ट करके 4 अप्रैल को अगर मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करी है, दैट डजंट मीन कि मैंने विद इन ड्यू डेट वो फाइल कर दी। मेरे को वो एप्लीकेशन की सारा कुछ रेक्टिफाई करने के बाद भी 31 मार्च से पहले पहले वो फाइल करनी थी। अगर वो नहीं करी तो वो केस आपका सर टाइम बाउंड हो जाएगा, उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा सर। ये भी सर कहाँ डिफाइंड है, पैरा नंबर 12 ऑफ सर्कुलर 125/44/2019 डेटेड 18th of November 2019 सर। अब सर इसमें टाइम लिमिट्स की बात कर लेते हैं। टाइम लिमिट्स फॉर इशूइंग refund order and interest. So time limit for granting of refund, that is 60 days from the date of the receipt of RFD 01. जैसे आपने आज मान लो आज एप्लीकेशन फाइल करी है तो विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ RFD 01 आपको वो रिफंड मिल जाएगा सर। अगर कोई मान लो आपको इंटरेस्ट मिलना है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, तो 6% मिलेगा सर नॉर्मल केसेस में, और 9% मिलेगा इन केसेस रिफंड अराइज ड्यू टू एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सर। फ्रॉम व्हेन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड,
फ्रॉम द 61st डे ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा सर। और नॉर्मल केसेस में 6%। अगर कोई आपका ऑर्डर पास हुआ है, कोई आप अपील में केस जीत गए हैं, कुछ भी हुआ, उसके बाद उस डेट के बाद आपको 60 डेज देखने पड़ेंगे। उस केस में अगर आपको रिफंड नहीं मिलता तो सर उस केस में आपको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसमें क्या है सर, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट इन द बैंक अकाउंट। अब वही है, सपोज प्रॉपर ऑफिसर ने मुझको प्रॉपर ऑफिसर ने सर मेरे को ये इशू कर दिया रिफंड ऑर्डर RFD 06 में। अब इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि मेरे को रिफंड मिल गया। रिफंड की सर डेट मेरी क्या रहेगी, जिस दिन वो मेरा बैंक में अमाउंट क्रेडिट होगा वो मेरी रिफंड की डेट मानी जाएगी सर। उसके बाद सर ये रिफंड की कैलकुलेशन की अमाउंट है। रिफंड कैलकुलेशन अमाउंट है सर, रूल 89 में ये डिफाइंड है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अब मैक्सिमम आपको रिफंड सर इसमें कितना मिलेगा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर सर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में सर आपकी सारी चीजें आ जाएंगी एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट टर्नओवर सर। अब सर इस केस में एक प्रैक्टिकल अमेंडमेंट आई है, वो अमेंडमेंट मैंने यहाँ रेड में हाईलाइट कर दिया सर। इस केस में क्या हुआ सर, बेसिकली क्या होता था, जब भी कंपनीज अपना रिफंड अप्लाई करती थी तो वो क्या करती थी, अब सपोज मेरा रिफंड हुआ मेरा एक्सपोर्ट हुआ 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब एक्सपोर्ट हुआ 1 करोड़ का, तो यहाँ पे मैं ऊपर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई में यहाँ डालूंगा 1 करोड़ रुपए। अब गवर्नमेंट उसके केस में क्या होता था, नेट आईटीसी उनको ज्यादा मिल जाता था कि सपोज अगर मेरा इनपुट है 50 लाख रुपए का और टोटल मेरी टर्नओवर आ गई सपोज 5 लाख रुपए की, तो 1/5 इंटू नेट आईटीसी जो मेरा रिफंड अमाउंट बनेगा वो रिफंड बनेगा। बट वही वो उसमें क्या हो रहा था कि कुछ एक एमएनसी कंपनीज रिफंड अमाउंट ज्यादा ले रही थी, वो अपनी रिलेटेड पार्टीज को ही एक्सपोर्ट कर रही थी, सर्विसेज का कह सकते हैं, गुड्स का कह सकते हैं, हायर रेट। तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाई और बोला कि इस केस में जिस अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोज मैंने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स। अब सपोज मैंने कोई गुड्स बेचे 1 करोड़ रुपए के, तो उसकी जो मैक्सिमम मैं वैल्यू ले पाऊंगा वो ले पाऊंगा 1.5 टाइम्स। अब सपोज अगर मैंने 1 करोड़ का कोई एक्सपोर्ट करा तो 1 करोड़ का 1.5 टाइम्स ही मैं उसकी वैल्यू ले पाऊंगा। अब हो सकता है मैं डोमेस्टिकली उसको 1 करोड़ रुपए का सेल कर रहा हूँ, बट मैंने अपनी फॉरेन सब्सिडरी या फॉरेन रिलेटेड पार्टी को 2 करोड़ का सेल कर दिया। भाई अगर मैं 2 करोड़ यहाँ ऊपर डाल दूंगा तो प्रोराटा करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को रिफंड अमाउंट ज्यादा ग्रांट होगा। उसको रोकने के लिए अमेंडमेंट लाए थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 16। उसमें उन्होंने बोला कि आपको जो वैल्यू लेनी पड़ेगी या जो हम वैल्यू कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलरली प्लेस सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर। अब मैं कोई सप्लायर हूँ, मैंने डोमेस्टिकली वो सामान बेचा 1 करोड़ का, अपनी ही मैंने रिलेटेड पार्टी को वो सामान बेच दिया 2 करोड़ का, टोटल मेरी टर्नओवर है सर 5 करोड़। तो यहाँ पे मैं क्या करता था, रिफंड लेने के लिए 2/5 कर लेता था। 2/5 के बाद सर मेरा रिफंड अमाउंट ज्यादा बन जाता था। तो इस केस में उन्होंने क्या कर दिया कि मैक्सिमम आपको 1.5 टाइम्स ही अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होगा सर। ये एक रिसेंटली अमेंडमेंट आई है सर। और एक सर ये प्रैक्टिकल इशू मोस्टली सामने आता है कि उन रिफंड्स का क्या होगा या उन बिल्स का क्या होगा, उनका रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कि मेरे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे सर। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ पैरा 5 मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है, एक सर्कुलर नंबर है 135 डेटेड 31/3/2020। यहाँ पे सर जीरो नहीं है, यहाँ पे आएगा 05 है सर, 135/05, जिसमें की गाइडलाइंस डिफाइंड है फॉर द रिफंड ऑफ आईटीसी अंडर 54(3). इसके अंदर लिखा है कि द रिफंड, ये जो अमेंडमेंट है सर ये रेड मार्क्ड है, द रिफंड ऑफ आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस not reflected in form GST or 2A was also admissible and copies of such invoices were required to be uploaded। आप जस्ट अगर आपके 2A में इनवॉइसेस नहीं शो रहे हैं, आप जस्ट उसको इनवॉइसेस को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आप उनको प्रोड्यूस कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सर आपको इनवॉइसेस का भी रिफंड ग्रांट हो जाएगा। तो सर ये मेरा आज का रिफंड का टॉपिक था। कोई क्वेरीज हो सर? Thank you, Ankit ji. Thanks a lot.
if anybody have any query, although we have short of time, sir, time is already exceed. Anybody have any query, he or she can ask from Ankit ji or Priyanshu ji, or otherwise we will share their number and their PPTs with all the members. They can directly ask. They can directly ask them specific if any specific inquiry of any of one have any inquiry. Good afternoon, everybody. Yeah. I have a question for our respected speaker, Mr. Prantu. जी जी Yes, yes, Abhijit ji, हाँ जी. Sir, जी, बताएं सर. I just wanted some clarification of on transfer of development rights. Yeah, Basically, I want to know कि जैसे फ्लैट्स के ऊपर बिफोर कंप्लीशन जीएसटी जो एप्लीकेबल होता है बस वो आगे पे हो जाता है एंड जो लैंड ओनर का शेयर को मिल जाता है केस प्लॉट्स बिकॉज प्लॉट्स पे जीएसटी लगता नहीं. आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है. जी आप Hello. दोबारा पूछेंगे जी. हाँ हाँ प्लीज सर. हाँ जी सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे फ्लैट्स के केस में हम बिल्डर ने जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करके आगे भर दिया एंड सब्सिक्वेंट शेयर उसका लैंड ओनर को चला जाता है. ठीक है जी. अगर इस केस ऑफ प्लॉटों के केस में कैसे करेंगे सर, बिकॉज प्लॉटों के केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता कस्टमर पे, तो इज द बिल्डर लायबल टू पे जीएसटी ऑन व्हाट ही ट्रांसफर्स टू द लैंड ओनर? नहीं सर, अगर जो आपकी प्रॉपर्टी जो है आपकी प्लॉट्स अगर टैक्सेबल ही नहीं है तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी. सिर्फ आपके डेवलपमेंट के ऊपर जीएसटी वो ले सकते हैं. ठीक है जी. ठीक है ना, आपकी सेल वैल्यू पे नहीं लेंगे, क्योंकि गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ये डिसाइड किया था कि जो आपके डेवलपमेंट प्लॉट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया था, लेकिन मेरे व्यू से जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए. ठीक है सर, ठीक है. हाँ जी. तो एज इज बस प्लॉट्स का बंदे ने कस्टमर को बेचा एंड उसका शेयर लैंड ओनर को चला गया, केस क्लोज ओवर देयर, है ना जी? यस यस, जब वो आइटम ही टैक्सेबल नहीं है तो हम उस पर टैक्स क्यों लगाएंगे. ठीक है सर, ये अभी ठीक है. लिटिगेशन मैटर है, आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है इस मैटर में. ठीक है जी, परफेक्ट, थैंक यू. ओके. Anybody have any question जी? If anybody have any question, इमरान साहब कंक्लूड करें जी. बिल्कुल. हाँ जी, thank you sir, thanks a lot. Thank you Priyanshu ji and Ankit ji for such a nice presentation and sparing valuable time for the profession. Thank you very much once again. Thank you to each and everyone who has attended this webinar. Thanks a lot on the branch मुझे side. ब्रांच की आप आईडी दे देना, मैं अपना पीपीटी और बुक शेयर करूंगा. या बिल्कुल प्रियांशु जी, हम मेंबर्स को, सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं ऑल मेंबर्स को आपकी बुक और अंकित जी ने जो पीपीटी है विद नंबर शेयर कर देंगे. अगर किसी भी मेंबर का कोई भी क्वेश्चन या स्पेसिफिक क्वेरी है वो प्राइवेटली और दोनों के नंबर पे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं आप सब लोग. तो थैंक्स अ लॉट इन द एंड. थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.
हाँ मामू जी।